25% आए हैं, 25.7% का एस्टिमेट था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो रेंटल रिपेयर कॉस्ट हैं जो 18% बढ़े हैं, जिसके कारण मार्जिन पे प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ रहा है। यील्ड भी 5% नीचे है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। आईजीएल की फटाफट बात करें तो नेट प्रॉफिट है 356 करोड़, पोल था 380 करोड़ के आसपास का, और मार्जिन 13.1 आया है, 14% का अनुमान था। तो अनुमान से सीक्वेंशली नंबर्स थोड़े कमजोर आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ये काउंटर है जो हम नजर पे रखेंगे। कैम्स की बात करें तो प्रॉफिट 1% ऊपर है, एबिटा 3% ऊपर है, और मार्जिन 1.5% साल दर साल गिरे हैं। तो बहुत ही फीके नंबर्स, और कैपिटल मार्केट स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले साल का बेस भी बड़ा था, तो ग्रोथ के चैलेंजेस रहेंगे। और आखिर में नवीन फ्लोरिंग 117 करोड़ का मुनाफा, एबिटा 206 करोड़ आया है जो पिछले साल 100 करोड़ था, और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी। तो नवीन फ्लोरिंग भी आज फोकस करेंगे। ये लीजिए सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए डील। एक गुजरात गैस का डालते आ रहा है। हाँ, गुजरात गैस, इन्होंने गैस के दाम काटे। तो सरप्राइजिंगली जो इंडस्ट्रियल वाला मामला जा रहा है ना, इंडस्ट्रियल गैस जो है, क्योंकि मोरबी बेल्ट जो टाइल्स का बेल्ट है, यहाँ इन्होंने कॉस्ट कटिंग की है। ₹3.25 पर MSCM जो इनका जो यूनिट है, इस हिसाब से आपको दाम कटते हुए नज़र पड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली गैस में जो हर मंथ रिवीजन होता है, ये रिवीजन के चक्कर में एक बड़ी कटौती आपको गैस के दामों में होती हुई नज़र पड़ रही है। इंडस्ट्रियल ऑयल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात गैस के लिए, और प्रोपेन के साथ ये कॉम्पीट करते हैं अपनी गैस बेचने के लिए। तो देखते हैं आज स्टॉक इस कटौती के बाद किस तरीके से गया। अभी खबर अच्छी होगी तमाम सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग। खैर, आप दोनों का धन्यवाद। ये इस नोट पर एक काम करें, मुनाफे की तैयारी समेट के ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज To build anything that truly lasts, it takes time. पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है, मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ऐसा लगा ना तो सेंचुरी का ब्लॉक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, चलेगा। Good morning. So we'll start with looking at where is the OI on options. As I think like yesterday, the 24,800 was a good amount of support, but given that the situation of Gift Nifty, I'm pretty sure that this 24,800 may not hold unless and until there is some recovery during the day. So the support is only 24,700 to some level, and then 24,600. It is starting with a huge gap down of almost 200 points. So given that yesterday it closed at 24,855, we may see the Nifty starting somewhere at 24,680 or 24,700. So it is likely to spend good amount of time between 24,650 and 24,700. That is how the situation is looking at the OI options. Because this US trade deal where the tariff, now they are saying about 25%, it is going to affect a lot of companies, including pharmaceuticals and automobile parts exporters, etc. So that will have an impact, and we don't know about how the IT services is going to get hit, because the clarity is not fully there. So we have to wait for the details.
but as of now it seems to be a knee-jerk response, and Nifty is already, in pre-market is starting around 600 points below yesterday's closure, which may not be the actual case, but we will see where it settles down in pre-market. If you look at on day chart, Nifty made a kind of a hammer, what they say. So, but 24,755 in day charts is a good support. If it breaks 24,755 today, and then we will have it can go all the way down to 24,570 in coming days. So, holding 24,755, which is an important pivot, is very vital for coming days. Our strategy yesterday continued with a long position with around 40 to 50 points of profit, but we will come to know about it once it reacts to today's opening. Let us see how the heavyweights are as of now playing in the preliminary. So around 9-8 we will come to know. It will depend upon how the heavyweights react to this particular news, and if heavyweights hold on to say reasonable loss than heavy losses, then we can see some recovery in the second half today. Unfortunately, if you see the trend meter in day chart also, it is showing all negative. So see, as I was saying, the trend meter is also showing even in day chart it is all negative. Let us look into even lower time frame. So 1 hour is all positive, but on the day chart, unless if it had continued the upward movement, even day chart would have become green, and that would have been really good for the market. But what is actually happening is at a higher time frame there is still some good amount of negativity. So 30 minutes 30 meter, it is 30 minutes started to change again from all positive to negative. See, this yellow line which is there in this particular strategy thing is very crucial. The second the price goes below and stays below it, you can see that even in the past that it would have continued to drop. So once it is below the yellow line, it will keep going down, and then once couple of bars goes up above the yellow line, then the momentum changes. So you have to look at if you are really playing out intraday, what you need to look at is both
So what you need to look at is both both that trend meter as well as whether the price is above or below this yellow line. So if it is continues to be, if the bars are getting made below the price line of, yellow line, then you should safely trail your stop losses in call, or you should be, having stop loss would have already been hit if you have set something. Then your option should be on the put side. $25,800 was support yesterday, but today it is likely to open much below. It is in fact opening at 24,642. That is the pre-market rate, almost 212 points down. So all the put writers are 24,800 will run for their money, and it can keep the market down below 24,800, because more and more put writer will try to exit at this point and try to make shift their put rating to 24,700 or to 600, etc. So let us see. The whole thing is now getting shifted to 24,900 to 24,500. निफ्टी और 10 वायदा बाजार के नंबर और कैश की लिस्ट तो बहुत लंबी है जिनके नंबर्स का आज हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो होगा टॉप 10। सुबह जो हमारे पैनल ने बढ़िया टॉप कॉल्स दिए थे उनका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, प्लस आज जो ब्रोकरेजेस के व्यूज आए इंडिविजुअल स्टॉक्स में, देश दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। So today we will not be showing only, we will be showing only the NIFTY thing.
because today is an ठीक expiry है, on इसके expiry बाद days. stock calls और how do you अभी काम करते हैं कैश कॉल्स पे तो On expiry days we will track only Nifty. On other days we will track both Nifty as well as gold. So those who are interested to get both so we have a situation where Nifty is starting almost market is starting almost 200 points below yesterday's closure. So the market has to stay above 24,755 for it to continue its upward movement. Otherwise, no, we can have further downside. सो ये दो टारगेट्स रहेंगे
9,600 से 9,800, 9200 के ऐसे ये वो सही। खैर गावा सर, इतनी बढ़िया छुट्टी से रिलैक्स होकर वापस कैसा लग रहा है ऐसी स्क्रीन को देखकर? Let us see market, no difference today's low. म्यूट हुआ। Once it comes above S5, then we can see the market rallying up to almost 724, 770, something like that. But otherwise, this 724 will become a resistance for as of now. So it has to cross 724 and then it has to cross almost 24,775. Then only it can try to recapture 24,800. Otherwise, if it continues to fall, see the downward targets are very steep. So to check that, now let us check at today's chart. Forgot to mark the yesterday's high and low. Actually, even in day chart, Nifty is already quoting below the S5, which is not a good sign. So it means it is in uncharted territory as of now. Fortunately, there was not a good amount of selling yesterday. There was only just 600 crores selling by FIIs. Considering earlier days they used to sell for 3,000, 4,000, 5,000 crores. It was around 600 crores only yesterday. So if FII stops selling, then there can be a stability. The stability can return to the market. But if FIIs continue to sell, giving a gap of a couple of days and again they start selling 4,000, 5,000 crores, then we can have much steeper fall in Nifty. So if you look at a broader picture, almost most of the heavyweights are on good amount of negativity today, except Hindustan Unilever. None of the heavyweight is in positive territory.
left, right and center there is selling. You can even say profit booking in some of the shares. But let's see whether any volume, how the volumes are playing. Some amount of buying is coming in. Let us see. If it closes above 24,843 today, then the entire shock of tariff and trade is once for all will be closed. Then the market will only react to the domestic use and kind of what is happening to the Indian companies. Slowly ITC, I think FMCG is turning positive as a sector, I think. Now we have ITC also turning into green. And rest of the other heavyweights also slowly kind of recovering from the day's low. If they do not break the respective shares day's low, then we can say that that today's day low will not be broken. Also, there is a good amount of put rating is there in 24,700. So they may try to hold it and try to hold the price above today for 24,700, so that they don't have to shell out their money. It's making a very big green bar, Nifty. So let us see. Usually the first 15 minutes bar usually decides more or less. There are many analysts who follow the first 15 minutes bar and they make a high and low out of it, and what they do is that as long as it stays inside that on both sides, they consider it as a sideways market. If the first 15 minutes bars high or low is taken out, it is a breakout or a breakdown, and depending upon that they will play for the rest of the day. So banking sector can turn around. Actually the bank Nifty is comparatively stronger than Nifty at this point of time. So if Bank Nifty turns around, then the fall will get arrested, at least for today. So keep a close watch on HDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank. They are the heavyweight from banking sector. They have direct influence both on Nifty as well as on Bank Nifty. But if on the rise, again selling resumes, like if you see very clearly, Nifty try to reach 24,724, that is the S5, and from there again the selling is starting. So this is the usage of having technical analysis. It will at least indicate to you. If you see if this particular bar has not made any wick, then it would have started off from here and it would have gone all the way up. The previous bar made a wick, so now it has to stay above 24,724. Then it will try an attempt during the day to 24,843. So all the put writers will exist there. And then they will trap all the call writers. So today can be a slightly tricky day because it is a monthly expiry also, not only a weekly expiry, it is also a monthly expiry. We need to see how the rollover takes place. We will come to know tomorrow.
and second half of the day. Please subscribe, share, so that we'll get our motivation. Also do make your comments whatever you feel like. Even kind of if you want to ask about any of the shares that you hold, where does it stand technically, we can help you, but provided you kind of send us the details or message which company share that you want us to analyze. Technically we will analyze, and of course fundamentally and news wise I think that you can always take care. Feel free to ask. Let us see whether more buying comes and Nifty comes back into the range, the pivot range. This current bar need to close in green above this 24,724. Then we will have more buying coming in. See, the final details of the tariff, etc. is not yet fully known. So this is only a kind of a bit of a knee-jerk response only. Maybe on the face of it, it is 25% or something like that. But in the details, if many of the major industries where Indian companies are exporting, for example, like pharmaceutical and automotive parts, if it is brought back to say 10% or 15% as a slab, then we may not see a further fall in the market. Then we may even see a jump, because this particular India-US trade deal was one which was hanging in the market as uncertainty. See, the market does not like any uncertainty. They need to know whether this way or that. Market is always binary. That is what people say. If they don't know what is going to be the outcome, then it will go RE. But if they know whether this way or that way, it will react, and then once for all done away with. Only FMCG sector is in positive at this point of time. But the banking is also slowly picking up. But ICICI Bank is starting negative, very negatively. That's not a good sign. ICICI Kotak, still bleeding. Let us have a look at the Bank Nifty. So in Bank Nifty day chart, if you see, even that is not at inside S5. So it has to come above 55,893. Then it will have another good rally out. So then I won't be surprised if it goes back to the pivot level. See a trend line also. Let us draw a trend line and see.
yesterday's high. Okay, and then let us mark yesterday's low. So Bank Nifty also in day chart it is kind of bit negative. Let us see how it behaves today. As of now, it has to come up and stay above 55,893. Struggling at that particular S5, so we will see. Once it gets into yesterday's low, no, then it will be totally different ball game altogether. So this is the usage of pivot lines. You can see very clearly. So you can also keep a track of this particular yellow line. It has to, it will keep coming down to a point where the price and it will meet, and either that will become resistance, or if it crosses the yellow line, it will become a support, and then from there again the market will lift. So first within 1 hour it has to take out today's high. Today's high is what, 730, 24,730. If it doesn't take out in first 1 hour the 24,730, then we may see a sideways expiry between 24,650 to 24,700. So if you are playing options, be careful. Now at this point you can only, it is better you play the next week options than today's option. See, the VIX is slowly inching up. It is almost 7% of today. So meaning that the volatility will slightly increase. Once it stays above today's high of 24,730, in the second half there can be a rally. That is how things looks.
Our strategy is exiting the long position which has been carried out as the stop loss is hit, and at this point it is giving no position. It means the strategy thinks that the market is going to be a bit of sideways. So if the strategy is in long, you should be playing on calls. If the strategy is short, then you should be playing on puts. If it says no position, it means is that the buyers and sellers are kind of more or less equal. The price action is going to be on the sideways. So whenever you see no position kind of scenario coming out of this particular strategy, you can safely take it, the market will be sideways, and unless things change. So then it is better not to play any calls and put. You will only, especially during on expiry days, the calls and put premium will keep on decaying as the day progresses. So it is better to avoid trading when you see no position in this particular strategy. See, the strategy is only on 9 minutes, so it means that it can change dynamically. So this is basically designed such a way the strategy reacts to every 10th minute, kind of how it is happening. It will take both stop loss and take profits into consideration. It behave accordingly. It is not a very kind of 0 to 0 and huge lottery kind of strategy. This is a more stable strategy, and it will try to look for swings. Swings meaning that whenever the momentum is shifting towards long, it will try to long and take long and hold it and take profit around 200 250 points. But if it is market is going against its position, it will close the trades at 100 at 220 points. So then you will have it will kind of a stop loss hit. So as of now, it is telling no position. It is not taking any position. You can say very, very safely assume market is going to be, at least for next 1 hour, it is going to be sideways. So whenever you see no position in this strategy, stay away from puts and calls. Do not buy anything. Wait. And then if the situation changes, it makes again a long call or a short call, and then you can start playing the calls and puts. There you go. The alert is getting thing, and for all the automated customers, probably at 9:45 it will trigger closure of longs that were taken day before yesterday. That will happen automatically to all those accounts for which we are providing automation. To the respective accounts, it will go and hit close the transaction. It will not have any position. And also those who are carrying futures, please ensure that you are rolling over today at some point, because today is the last day for JULY futures. So almost half an hour now. Let us see where the options writers are playing. So they are started to write few higher, almost 193 lakhs of calls have been written in last 30 minutes, meaning that 24,800 is going to be a very, very stiff hurdle to cross. But 24,700, there is a higher put rating has got increased, in the sense that almost 89 lakhs puts have been written in last half an hour, and call is also being written, even though overall there is more puts than call.
So meaning that 24,700 can become the base today, and during the day, at some point, since so much call is being returned, almost 1.5 crore call is outstanding, they will take the market down to make that zero, and then they will bring it back to 24,700. So beware of it. Otherwise, they will try to hold it at 24,700 almost throughout the day. And what will happen is this, both the strikes, which is currently, let us see the prices.
So every 20, like I mentioned in the chart, every 24,700 calls and put have been written heavily in the first 30 minutes. Almost 1 crore options have been written. So market, they may hold it around this 24,680 to 24,720, almost for the first half. See, because currently they are both are quoting, the call and puts are going around 48 to 50 rupees. So they will gobble up the entire 100 rupees, because by 2 o'clock both of them will become 20 rupees. So in effect, what the first half an hour, the people who have written 1 crore calls and 1 crore, almost 1 crore puts, they will make 25 to 25 crores each. So it is, so to make that happen, they will try to hold the Nifty between 24,680 to 24,720 till 1:30, 2 o'clock, when the decay will rapidly happen. So you can now, currently it is priced at 50 rupees and 52 rupees. That is, call is at quoting at 51 rupees, and put is also quoting at 50 rupees. So if they continue to hold the time decay, because today is being the last day and today is the expiry day, what will happen is they will slowly start decaying. Even if the price remains same, they will come down to zero. Assuming if today Nifty closes at 24,700, both the prices will become to 5 paise. So they will walk away with 100 rupees together. So heavy straddle is being written, be careful. If you have any other doubts, please message in the chat. I can always answer. And please like and subscribe and share. So that will be a good encouragement for us. Now the strategy is again close to the earlier one on stop loss. Now it has moved into long position, assuming things have changed in the back end. So I am pretty sure that today it will close about 24,724, but how long, how far it will go up, you will know in the back end. So it is going to be a dull period now. Around 10 to 10:15 usually there will be a small drop. You can expect normally at between 10 to 10:15 there will be a drop, and then after 10:15 it will again stabilize, and then it will be hovering around the same. That is how the market is likely to move. That is from my experience. It may not happen exactly the same way, but that is from my experience. So let us hear now what CNBC people are telling for some time. Then I'll be again back. का ऐसे मेंटेन करना है. ऊपर में हमें लगता है इसमें 35 और 40 तक का जोन देखने मिल सकता है. Okay, what is help here? I mean, ये closer to अपने all-time high hit करता है आशीष बत्तीस का. So again I repeat, we have the same signals. What is there in the strategy? We have the same signals in Telegram also, and you will get the signals immediately there, as and when any long position and short position that is taken by strategy. We also will automate it for you if you kind of wanted to get it automated for a monthly fee. Both this as well as gold strategy put together, we will automate, so that simultaneously in your account gold as well as Nifty will be traded according to the strategy that is being live streamed. And that is a kind of strategy where you can join, stop, whenever you want, because the account will be in your control, the money will be in your control. What our systems will do is that as and when the strategy says buy, it will go and buy in your account, and as and when the strategy says sell, it will go and sell in your strategy. That's all it will do. The entire financial control of the account, etc., all will be there. Whenever you want to stop it, you can always stop it. In fact, you will be feeling, you can go ahead and even not, on your own, you can also close the long position, and whenever you feel this profit is enough, etc., then automatically in the next turn, the system will automatically consider that and take the next position. So please feel free.
if you want any clarity or doubt, etc., is there. I have already given the number in the chart itself. It's 90032905009. You can always call me, and I can always explain to you. And it's not a very bumper strategy where you will get lakhs and lakhs of rupees. Please don't come with that mindset. If you are looking for 20 to 24% per annum after brokerage and after service charges, that is for you. If you are expecting 40, 50, 60, 70 or etc. and all, that will not come in the strategy. Let me be upfront, very clear on that. And feel free to ask any of your doubts etc. in the chat window. I will be able to explain. If you have other language preferences, you can tell. I can also explain in couple of other languages, is Tamil, Telugu and Hindi. So based on your requirement, we can always suggest that. Not only on Nifty and etc., you can ask on shares also. We will do the research for you and then come back in the same chat window. And also, as like everybody says, please like, subscribe and share. I have not seen anybody making that. So please, for encouraging us, please do that. So at least at this point of time, the strategy is saying go long, meaning that it is saying that it will market is likely to move up. So whenever you see long in the strategy, do not hesitate, do not buy any puts there. What will happen is that will be against your the strategy has both leading and lagging indicators on the back of it, almost 4 of it, and then there is a momentum indicator and then couple of other aspects. So it has a view much slightly better than what we can see optically. So what we have done is to match Nifty's trading with gold. Meaning, see, gold is very steady and it can keep giving you profits, and it can complement very well with Nifty. One that is a very more stable, and Nifty is more liquid and volatile. That is the reason we have combined Nifty and gold, so that you will have even if you are making some amount of losses in one of the assets, you will end up the other asset can make me compensating. Only of all heavyweights, Hindustan Lever is the only one which is on the positive side. Actually, that is good. If FMCG starts kind of going up, FMCG index, what will follow is the automobile two-wheeler sector basically. What FMCG sector gives you is that the rural economy is growing. The consumption and the overall volume etc. for all the FMCG comes in tier 2 and tier 3 and rural economy only, not from the cities. So if FMCG does well, what will follow is the two-wheeler industry will start doing better, because there is more money is expected to be in rural. I think FMCG, another reason why it is kind of people are looking forward is the monsoon. This year monsoon is good. It is 10 o'clock now. Between 10 to 10:15, you can always expect a drop in Nifty. That is a standard thing that behaves. We don't know why. Maybe it is Mauritius opening at 10:30 and people are positioning. But usually 10 to 10:15 there will be a dip. That is what we are seeing. I'll be back in a minute. నేను దీనికి పాలు కావాలంటే చూడండి, నేను డిస్టర్బ్ చేస్తాను. పాలు
Apologies, that was my cat, which went and kind of typed something on my keyboard. Like I said, around 9:40, that around 10:15 you'll have a drop between 10 to 10:15. So Nifty is trying to make a low. Usually the low will get defended out here. Low will get defended out here. Those who are in kind of a gambling mode can think of buying 24,700 or 24,650 call at this point, with a stop loss of 24,634 on Nifty spot, meaning that you can buy the call now, and if Nifty goes below 24,634, that is today's low, then you can come out. Otherwise you can hold it. Nifty will attempt another, can make an attempt to go about 24,720, and that time you can come out. But this will be a fastest finger, meaning that you have to be very, very quick in reacting, etc. You make a 10% or 15%, you come out and then make the most of it.
those who have kind of gambling instinct, you can buy 24,650 call now. And if Nifty goes below today's low of 24,440, 640, then you should come out. But be careful because you'll have the prices can go down to from 50 rupees to it can go down to 35. So you may end up having 15 rupees loss. But if Nifty recovers back to 24,700, you will get 10 to 15 rupees, and you should come out at 24,700. You will make 10 to 15%. Always have a target and then immediately come out of it. So already now 57. So I think when I suggested it was around 50 rupees. It is now 57. Around 60 rupees you start trailing, because for 50 rupees to 60 rupees you would get almost 10 to 22%. That is more, then you would have made the day. It's already now 62 now. Now trail the stop loss with 60. That's all. Then you know you have made almost 22% of your capital. Be happy with it. Period. Now yes, I think it would have come out, because it is already now 58 now. Like I said in the morning, between 10 to 10:15 there will be a drop. The Nifty is having that particular drop, and there is one trade which you have already completed. Those who have not exited, please keep strict stop loss so that you won't lose your capital.
Now slowly Nifty again will try to crawl back to 24,700. Hindustan Unilever, I think the results impact, it is massively up now. Because of Hindustan Lever, even ITC is now beginning to climb. ITC is a heavyweight stock, so it can take the market up. And the problem is with the Reliance, ICICI Bank and HDFC. All the three heavyweights are really down. So Bharati, Kotak, Axis, everything is kind of a down. So again slowly Nifty will be brought back to 24,700 like I said in the morning. Heavy straddle is written in 24,700, so they won't allow Nifty to drift far away from 24,700. If it goes up, again they'll bring it down. If it goes down, they will again bring it up. This is the standard format of option traders on expiry days. But if it breaks out either which way, then there can be a very steep fall or a ferocious short covering, since this is a monthly expiry. Assuming, hypothetically speaking, if Nifty goes above 24,843 or something, then there can be a ferocious short covering even today itself. I think Hindustan Unilever results will have impact on other FMCG stocks like Dabur, Marico, etc. and all that. So we can see the impact on ITC already. Similarly, it will boost up all the other consumption-based stocks. So I think today's low was defended as of now.
It was around 24,638. Now the previous bar went all the way up to 24,650, and then from there it is recovered. Now it is 24,678. Those who have taken the 24,650 call are suggested around 950 in the morning. It was around 49.50 rupees. Continue to have a stop loss of 45, so that you may maximum loss you will lose is around 5 rupees per lot. And no, at this point you can have a target. Currently, the target is around 60 rupees. If it crosses above 60, then it can go up to dashboard. 1 second. Struggling with my charts. Just give me a moment. Yeah, I'm back. As I was saying sometime a few minutes back, once it crosses the 24,650 call, once it crosses 58, it's already crossing it, and stays above 60, it can go up to even 134, but that is a big lottery, so that can take place only if I think it is climbing now. So shift your stop losses. If you already bought it to 50 rupees, that is your cost, because if it doesn't rises with this particular jump, then probably it may again retest its low.
Mm. Again, 24,650 call is trying to cross 60 rupees. It has a resistance at 63. If once it crosses and stays above 63, then you can have 63 as your stop loss. So that will meaning that you would have made 13 rupees on the per lot. Otherwise, it can go down. If you have multiple lots, I suggest that you book profit at least half of it now. That will bring down your cost, overall cost, and you can have the overall cost as your stop loss. It is trying to cross 60. Watch it carefully. Once it crosses 63, you will see a massive jump. But it will be tough for it to cross 63.
Market is very quiet. Like I said, no, between 650 to 720, 680 to 780, 720, they will keep the market within the tight range. So that entire 24,700, both calls and puts will come down to single digits. Then the move can take place. Till such time, it will be going to be a boring day ahead.
Again, no, Nifty is trying to make slowly trying to grow up. See, what you can see is that this particular yellow line, no, which is coming down. Once this bar goes above, there can be a no bigger short covering. What it is, no, there is a convergence taking place here. If this candle gets even nearer and slightly above, then you can see good amount of buying coming back again. So that is at 710. Currently, if you see 24,710 is what will become resistance for this candle or the next few candles. If it stays above 24,711 and the yellow line continues to stay below, then we can slowly start seeing buying start coming back, and then market recovery can be much faster. Keep an eye on the net volume in the chart also, no? See, you see a blue figure here. That is this place, which is, if it is minus means there is a bigger selling. If it is plus means the buyers are on the higher side. So you would see correspondingly when this particular amount, the volume becomes positive, you will see green candles coming up. If there is continuously negative means there is more selling than the buying. So it is actually the net volume figure. That will also give you a view how much selling is getting absorbed.
can see how the bits are getting absorbed. See, the second it is turning into positive, you can see the jump in Nifty numbers. And also you could see our call, no, which we talked about 24,650 is currently at 64 rupees. See, from 63 how it is jumping. So volume of buying going up, and price of our call is also going up. Now if those who are carrying it should have 69 as your stop loss. Let us see whether it crosses 24,710. I mean 724. If it crosses, there can be even bigger short covering. So our candle is now crossing the yellow line. We need to see where the next candle is going to be. So those who are bought at 50 and still holding, they already have 40% return. Book at least 50% of the profit. It went twice. In fact, it went even below 50. The call was given to buy it at 50 and have the stop loss as Nifty spot number as 24,630. So it never went to 24,630. Now you can continue to hold it with 65 or 66 as stop loss. It is at 74 now, 73 now. Nifty is again coming to the closer to the resistance of 724. Let us see whether it
it gets better. Shit. Okay. 93. See how it is struggling to cross 24, 724.
So from morning twice it has made an attempt to cross 24,724 and it has failed to do so. So our strategy is trying to book profit here and there. So it is, if you see exactly at that point, at the pivot point, the strategy made a closure and saying you take a short short position. So this will be the order of the day now. 24 680, 670 and 624 720. Now let us see where the call and put rating. See, both, that is 24,700 call and put has now come down to 42 to 42 rupees, meaning it has already lost 8 rupees. So irrespective, the market is the same place, but the prices of both have come down, meaning that if it makes one side move, a very big move, then we can see, but otherwise it will, they will keep doing this. And you would see huge volume in 24,700 calls and put today, because people will be buying, many people will be buying puts, and then the market will go up. Many people will buy call, then the market will come down. The option traders will do this tamasha till 12 o'clock, unless and until there is a dramatic rise in buying, because we are seeing, if you go back to again volume in the volume chart, earlier it was positive, now again it is 1.34 million negative volume. So that is heavy selling is coming. So the option traders are trying to ensure that it doesn't cross 724, because if once it crosses 724, it is another 100 points jump, and this entire call rate of 24,700 will go for a big toss. It can also happen, we don't know. For that to happen, a couple of heavyweights need to change from red to green. That I don't see it happening. Even now, only ITC and Hindustan Lever is on the positive side. Rest of all shares in red. But our call 24,650 has now gone up to 109 rupees. Those who are having is almost doubled, more than double now.
market seems to be in a mood for big short covering. I won't be surprised if Nifty ends up even in green if it maintains this particular momentum. So we are seeing only positive volume, heavy positive volume. So as long as this volume is on the positive side, no, can safely expect Nifty to keep creeping up.
volume is increasing on the positive side very heavily. So further short covering can take place. Market has been short for last 2-3 days heavily, so anything can happen. At least now the 24,700 call writers are trapped. They are trying to those who are still holding 24,650 should exit now.
again volumes are going to negatives now, so there may be a small correction and then again a jump up, because always market will never move in a linear fashion. You should always remember that.
I think Nifty will now stop only at 24,819. So one can buy, some calls with very strict stop loss. Once it crosses 24,780, then it will stop only at 24,890. Morning 24,650 was suggested at 50 rupees, now it is 137 rupees. Can continue to hold 24,650. If Nifty struggles at 24,820, around 19 odd, there you can exit. बाहर पहचान कामयाबी की। వాళ్ళిద్దరు వదలనే అంటున్నారు. అలాగే నేను ఒక కేజీ 50 రూపాయలు తీయమంటే అది 30 రూపాయలు అవుతుంది. అన్ని విధాలు కూర్చొని ఉంటారు. అయ్యో I think the way market is moving, it is likely to end up in green today, I think. See, the buying will come in waves, so don't be in a hurry that it is reversing, etc. As long as this volume in the chart is positive, so you can continue to have momentum going up for Nifty to go up.
As it was indicated, I think market is trying to cross that to 24,819, which is the support 3 S3, because usually yes, supports will become resistance. Let us see whether it crosses 24,819. There is a good amount of volume that is going up on the positive side. But if it crosses 819, we can be pretty sure the market will end up in green. Those who have bought 24,650 should continue to hold with a stop loss of 135. Currently it is quoting at 168. The stop loss is deep. Or you can keep trailing it for 15 points. For example, if it is now 175, make it 160, and then wait for it to go up to 200, and then increase to 175, like that. Market is trying to cross this. It is crossing that to 24,219. 819. Still trying to cross it. Let us see. If it crosses, those who are having call should hold it, because market will become green. At least it will make one attempt to become green. At that point you can kind of sell off. But if it struggles at 24,819, it goes below 24,800, then you can square off your calls. Volume is still good. It's positive only, net positive. So let us see whether the next wave of buying will take it past 24,819. And the major break, this thing will come at 24,843. If it crosses 24,843, then it will break this.
see 24,819 it is.
పెట్టండి అక్కడ ఏసీడీ
coming this. Some of the banking stocks is trying to become positive. I think apart from FMCG, banking is the one which is trying to make become green. And if as of now Axis Bank is in green, if HDFC, ICICI, Kotak turns into green, the bank nifty can pull the market up again. If at all now, I think it is a time that the decay of puts and calls will be very, very steep. So if at all anybody wants to play the puts and calls, they should do it between 210, after 210. Because between 210 to 220 there will be a huge move, either one of the side. If you are able to take a kind of cover calls, meaning on both sides, one of them can move. After 230, I think the market may swing really wide, and it is only those who have very quick response time, typing, etc., will make money. Otherwise, it will be a bit wild today. See how Nifty came down to this particular yellow line, and I said in the morning that once it crosses this yellow line, it will continue to go up. That is what it did. Now again it is taken support here. If it crosses 24,819, for sure the Nifty will end up in green today. Please like, subscribe and share. That's the only encouragement you can give to us.
भैया एक अच्छे लेवल पे लग रहा है। सबसे पहली बात मैं देख रहा हूँ जहाँ रिस्क कम हो तो होगा पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो रेंज थी वो रिटेस्ट हो रही है और नॉर्मली ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। इसके बाद स्टॉक टेक ऑफ होता है। दूसरी बात सेक्टोरल सपोर्ट है। हालांकि एसआरएफ में कल जो एक्सपेक्टेड थी उसके थोड़े अगेंस्ट मूव आई है बट ओवरऑल मार्केट में वो आई थी। तो मुझे लग रहा है जो पीआई इंडस्ट्रीज की 4300 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है अगस्त महीने की करीबन 115-16 के आसपास चल रही है। यहाँ मैं खरीदना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखेगा 90 के नीचे 88, 87, 88, 87 के आसपास। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 165 और 175, 165, 175। चलिए पीआई इंडस्ट्रीज बहुत बहुत ही आप देखें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये 4300 की कॉल आपको बाय करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। फिलहाल एक इस कार्यक्रम में ब्रेक। आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई करता में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। To build anything that truly lasts, it takes time.
वो असल में थोड़ी टॉपिक गुड आफ्टरनून, सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स। असल में क्या है, रोज वो कॉफी लेके आता था, बता ही देता हूँ, फिर आप लोग पता नहीं क्या बोल रहा था। ब्लैक कॉफी देता था, आज वो लेकर आया बटर स्कॉच कॉफी। तो काफी देर से वो स्मेल आ जा रही थी, तो मैंने इसलिए चुस्की ले ली है, इंटरेस्टिंग सी। खैर मदद करने के लिए आज थर्सडे है भाई, थर्सडे के दिन अपन जाएंगे कोलकाता, होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर के पास। राजेश सर रेडी हैं, कुछ देर में राजेश सर से बातचीत करेंगे। हम तक रीच आउट करने के तरीके जो स्क्रीन पर रख दीजिए भाई, वो व्हाट्सएप नंबर और वो ईमेल आईडी दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बस इतना, ये एफर्ट आपके हैं, आपको टेक्स्ट करना है या ईमेल करना है, उसके बाद हमारी टीम्स आपसे कम्युनिकेट कर लेंगी, सारी बातचीत हो जाएगी। वो इनिशियल एफर्ट आपको देना है, वो उसके लिए कैसे देना है वो आपकी मर्जी, पर रीच आउट करिए प्लीज। खैर पहले जरा मार्केट दिखा दें यार। अभी क्या है, ट्रम्प साहब की टीम उठेगी, ट्रम्प साहब जब सो के उठेंगे तो उनकी टीम बताएगी कि राजेश अग्रवाल सर और बाजार के बाकी दिग्गजों ने बाजार संभाल लिया, आपके कहने पे भी बाजार, भारत के बाजार गिरे नहीं, तो फिर चिढ़ेंगे वो रात में। पर क्या, एक अंग्रेजी वर्ड होता है रेजिलियंट, या कह लीजिए बायंसी। बायंसी मतलब कोई भी चीज जबरदस्ती पानी में घुसाई जाए, बॉल तो आप छोड़ेंगे तो पुड़क से ऊपर वापस आ जाती है। अपना बाजार वैसे जबरदस्ती ट्रम्प साहब दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसे कहते हैं रेजिलियंस। एक समय ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर जो है भाई साहब 220 पॉइंट दबाव में था। 220 पॉइंट दबाव मतलब एक समय ऑलमोस्ट 1% कमजोर था, पूरे लॉसेस रिकूप करता हुआ ऑलमोस्ट इन ग्रीन। हम बस 5 पॉइंट दूर थे इन ग्रीन में आने से। तो टेक्निकली मैं कह सकता हूं आप फ्लैट हो गए, हरे निशान पे आ ही गए हो। इस शो के दौरान थोड़ा सा अपन पुश दे देंगे, इन ग्रीन आ जाएंगे। निफ्टी बैंक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट वो भी दिखाई है। एक समय 600 पॉइंट दबाव में थी, एक समय 1% से ज्यादा दबाव था, निफ्टी से ज्यादा दबाव था निफ्टी बैंक, एक 1.1% पॉकेट। वो 1.1% वाला निफ्टी बैंक ये देखिए बिल्कुल 0.00%। अभी हरे में भी आ चुका है बीच में। ये जब हरे में आया था तो 20 पॉइंट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। ये है बायंसी, एक परफेक्ट एग्जांपल। ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहना दिया, करना दिया, कितने ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ डाल दिए। पर हम एक्चुअली एक ही सरदर्द है मेरे लिए कि मुझे ये नहीं पता कि पेनल्टी कितनी लगाना चाहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ 25% तो हम तैयार थे, क्योंकि हमने ट्रेड डील करी नहीं उनसे। हम डटे खड़े रहे, ये भी अपने आप में बड़ी स्पाइन वाली बात है, ट्रेड सीधी करने वाली बात है। लेकिन वो एक क्या कहते हैं, अनसर्टनिटी उसकी है, पेनल्टी वाला पार्ट वो नहीं पता, लेकिन बाजार ने वर्डिक्ट दे दिया इन ग्रीन। लीजिए भाई साहब, दिन के हाईस पे निफ्टी इन ग्रीन देख लिया अपन ने इसी शो की शुरुआत, पूरे लॉसेस से रिकवर। गजब है, बहुत ब्यूटीफुल। बस ये ब्रेथ अभी थोड़ी सी डिटोरिएटिंग है, चलता है यार। एक समय 1.1:10, 1:9, 1:8 के रेशियोज थे, अब देखिए ब्रेथ क्या है। ठीक है, ये भी इंप्रूव ही हो रही है हर टिक के साथ। अरे सर चिढ़ेंगे तो है शाम को, है ना? अरे सर कहाँ है? मैं कह रहा था ट्रम्प साहब चिढ़ेंगे ना जब देखेंगे बाजार हरे में बंद है, मेरा इतना कहने के बाद, करने के बाद। गुड आफ्टरनून आशीष जी। कल कहा ट्रम्प साहब जुड़ेंगे, लेकिन आज की निफ्टी की मूवमेंट को, कल रात के ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट को देख के मुझे कुछ दिन पहले की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जो निफ्टी कह रहा है ट्रम्प साहब से, झुकेगा नहीं साला। तो वही बात है, इतनी हड़कंप मचे हुए थे कल शाम को, लोगों के व्हाट्सएप फोन कॉल्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं निफ्टी डाउनसाइड सर्किट ही ना हो जाए कहीं, इतनी पैनिक थी बाजार में। और निफ्टी ने दिखा दिया कि फंडामेंटल्स अपनी जगह होते हैं। और ये जो ट्रम्प टैरिफ की बातें थी, ये बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा था, सिर्फ बात ये थी कि कितना लगेगा, और जो अनिश्चितता है वो पेनल्टी को लेकर के है। तो देखते हैं क्या होता है।
मुझे पर्सनली ये लगता है कि ट्रम्प साहब की ये जो कुछ भी है, इससे ज़्यादा चिंताजनक बात इस वक्त रुपए में जो गिरती हुई ट्रेंड है उसको देख करके है। कल आप देखो 89 पैसे की गिरावट आई। आज हालांकि कुछ बढ़ा है 13-14 पैसे, वो भी आरबीआई इंटरवेंशन के बाद, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन साथ में ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो कि ट्रम्प टैरिफ के कारण से दिक्कत में आई है, उनको एक सहारा है इनडायरेक्टली कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंटेड थे ये, अब सिर्फ पेनल्टी की बात है। अब ये कहीं शाम उठ करके अब नींद से और कुछ नया ट्वीट नहीं डाल दें, बाकी कुछ दिनों बाद फिर वही फंडामेंटल्स की बातें होने लगेंगी। झुकेगा नहीं। इन ग्रीन निफ्टी बैंक 100 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर हर टिक के साथ मोमेंटम पकड़ता हुआ है। ध्यान रखिएगा निफ्टी के क्या कह लीजिए एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कवरिंग के मूव्स तो आ रहे हैं बढ़िया। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए। आज अपने को हैदराबाद कसगंज हो गया मेरे ख्याल से, अलीगढ़ यूपी और लखनऊ यूपी जाना है। चलिए सब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। हैदराबाद से टीवी सुनीता जी स्क्रीन। सुनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सुनीता मैम कब से स्टॉक मार्केट में, कितना टाइम हो गया? सर सीखना शुरू किया तो 2013 से सर। 2030, तो इट्स बीन लॉन्ग। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? अभी तो सीख ही गए होगे आप। टेक्निकल्स देखते हो या लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल्स जांचते हो? थोड़ा बहुत आप ही के चैनल देख कर सीख लिया सर। मिस करना शुरू किया था सर, जब चाइना क्रैश हुआ था ना, तब से शुरू किया था। ओके। अच्छा सुनीता मैम पहला सवाल कौन सा? ये कौन का बताइए सर। 5 शेयर कंटेनर कॉर्पोरेशन है अपने पास? जी अभी 5 शेयर ही है, 1040 में किया था, खरीद लिया था सर। कंटेनर कॉर्पोरेशन 5 शेयर 1044 की। 1044 ये तो हाँ। काफी गिर गया है। राजेश सर कंटेनर कॉर्पोरेशन पहले वो डाइवेस्टमेंट उस डाइवेस्टमेंट में ये प्लेयर्स खूब एक्साइटमेंट हुआ था, सब ठंडा पड़ रहा है माल। मेरा तो आधा हो गया माल, क्या करूं? देखिए पहले तो सबको नमस्कार, जो भी पैनल में मित्र महिला मित्रगण हैं उनको। और जहाँ तक कनकौर की बात है, आपने सही कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की जो न्यूज़ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसे देख ठंडा पड़ता हुआ जब सरकार ने ये कहा कि इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इस पर, तो उसके बाद ठंडा पड़ा। इस वक्त जो इनके पास है, मैं सिर्फ एक चीज़ इनको जोड़ना चाहूँगा कि 4 पे एक बोनस आया है, तो उस प्राइस को भी थोड़ा एडजस्ट कर ले तो आपको लॉस थोड़ा कम दिखेगा, हालांकि लॉस तो रहेगा ही। वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी आई पिछले क्वार्टर्स में, जहां मैनेजमेंट ने 18 से 20% की गाइडेंस दी थी, 8% की आई। लेकिन FY26 में 4 नए टर्मिनल्स ये जोड़ रहे हैं, पतरी, मंडलगढ़, चुनार और जोधपुर के पास, जहां से हमें लगता है वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़त आएगी और जो नेटवर्किंग कैपेसिटीज हैं उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी, इस कारण से बढ़त हो सकती है। दूसरी, इस लेवल्स पे मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं और इस वक्त ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। हमारी तो ये राय है कि अगर फंड इनके अलाउ करते हो तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ऐड करना चाहिए और टाइम होराइजन 9 से 12 महीने का रखना चाहिए। ऐड करना चाहिए, हाँ। वो 4 पे एक बोनस का इसी महीने की शुरुआत में शायद वो इसको रिडाम रखिएगा। एक स्टॉक दिखाएगा डायरेक्टर साहब, APL अपोलो। अभी रचना जी ने मैसेज भेजा है कि वो सुबह बताया हुआ इकलौता बाय कॉल था सुबह का, मेरे टारगेट अचीव हो गया। ये देखिए APL अपोलो सुबह उस कमजोर बाजार में रचना जी ने एक बाय साइड का आइडिया रिकमेंड करा। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेड। देख रही हूँ रचना जी, थैंक यू स्ट्रेट के लिए। कसगंज जा रहे हैं अश्लेषा मिश्रा जी के पास। अश्लेषा मैम सवाल आपका। Yeah, good afternoon, sir. Hi, ma'am. So, yeah, I have one question that I have 50 shares of Asian Paints. It's at the rate of 23.98. So, I want to know whether should I hold or buy more or like what is the target in the short term? अच्छा ये बताओ, अगर राजेश जी हिंदी में बोलेंगे तो चलेगा क्या? Yeah, obviously. But actually, I am a bit addicted to speak in English. That's why. पर सुन तो लेते हो हिंदी में, है ना? Obviously, sir. बस तो राजेश सर हिंदी में बता दो एशियन पेंट्स में करना क्या है?
देखिए इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, मैं जस्ट इनको यही कहना चाहूंगा कि अपने नजरिए को थोड़ा बढ़ाएं, कीप योर होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड कैरी ऑन विथ योर होल्डिंग्स। दुनिया की 10 टॉप की डेकोरेटिव कंपनी है, कोटिंग्स में कंपनी है, 27 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 1,60,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं इनके, और जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस गिरे हुए हैं उनका इनको फायदा मिलेगा, प्लस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो भाव बढ़ा हुआ है और क्रूड डेरिवेटिव्स के दाम गिरे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है इनको। कुछ दिक्कतें थी क्योंकि प्राइसेस सबड्यूड थे, डिमांड उतनी नहीं थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बड़े नाम जैसे कि बिरला, एस्ट्रल, JSW सभी कंपटीशन में आ गए, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन इन लेवल्स पे 2300-2400 रुपया में ये स्टॉक में बाय करनी चाहिए, साल भर का होराइजन रखना चाहिए। हमारा अनुमान है कि 15 से 20% की बढ़त साल भर में बिल्कुल हो सकती है, तो साल भर में यह खरीदारी की सलाह है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाय और एटलीस्ट कंटिन्यू विथ योर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। यू कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, अपना होराइजन चेंज करने की जरूरत। लखनऊ जा रहा हूं संजना गर्ग जी के पास। संजना मैम, गुड आफ्टरनून। संजना मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मैंने श्री रेणुका शुगर मिल के जो है शेयर्स खरीदे थे 250। जब मैंने खरीदे थे तो वो 53.46 के थे, बट अभी गिरते गिरते 30 पे आ गए हैं, तो व्हाट शैल आई डू? 50 की खरीद है, डॉक्टर साहब इसे ठीक करिए। 53 के खरीदे थे मैंने। 53 की खरीद, तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है। राजेश सर क्या करें, श्री रेणुका शुगर ट्रैक कर रहे हो अभी भी आप स्टॉक को, या छोड़ दिया? सर सही कहूँ तो ट्रैकिंग में नहीं है, बट पिछले दिनों कुछ कारण से देखा था कंपनी के हालात कुछ बेहतर है नहीं, डेट बढ़ा हुआ है और आपके नंबर्स भी उतने अच्छे हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि इन्हें कहीं भी कोई भी उछाला है तो निकलने का मन बनाना चाहिए। अगर शुगर सेक्टर में ही इनका मन है रहने का, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर या बहुत बेहतर स्थिति में बलरामपुर या EID पैरी हो सकती है। बलरामपुर चीनी सेक्टर लीडर और EID पैरी, तो राजेश सर कई बार बता चुके हैं कैसे सम ऑफ द पार्ट्स देखना चाहिए उस धंधे का। खैर, इससे मतलब राजेश सर निकला जाए, लॉस भी है तो भी लॉस बुक करके निकले बाहर, है ना? यस डन, ठीक है। सुनीता मैम, अगला सवाल। सर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 80 रुपए में सब लिया था सर, अभी रखूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या प्रॉफिट करूं? रखने अरे यार बढ़िया कमा रखा है इस पे तो। राजेश सर मुनाफा बांध लेना चाहिए क्या? पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो इतने अच्छे मुनाफे के लिए और इतने अच्छे लेवल्स में खरीदारी के लिए। कंपनी पे आए तो कंपनी पहले सिर्फ केमिकल्स में काम करती थी, अब बेसिकली 3 वर्टिकल्स में है, केमिकल, EV बैटरीज और टायर में। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में है जो कि नॉन रबर प्रोडक्ट्स में यूज होती है। टायर में इन्होंने बिरला टायर लिया है जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। SUV वगैरह में OEM मार्केट में तो अभी उतना है नहीं, बट रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। आगे चलते हुए हो सकता है OEM में भी आ जाए। पहली तिमाही के नतीजे जो इस बार आए वो थोड़े फ्लैट आए, जहाँ वॉल्यूम कम थे, लेकिन EBITDA पर kg में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे जंप आए। कुछ ब्रांडेड नैप्थलीन बॉल्स भी ये बाजार में उतारने वाले हैं जो कि सीधे सीधे B2C में आ जाएगा। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बैट है, और फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ ऐड करना चाहिए। हमारी हाउस की कॉल है कि साल भर में ये स्टॉक कम से कम 600 रुपए तक जाता हुआ दिखता है। अरे वाह, और अपनी खरीद है 90 की। लीजिए भाई, बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपके लिए। अश्लेषा मैम, अगला सवाल। Yes, so I want to ask about Seagull India. Like when there was a IPO open, at that time I got this IPO and around 340 amount something I bought it, or 335. So I have 75 shares of it, but now it's in bit loss. So should I hold or exit from it, or like what should be the stop loss? क्या करना चाहिए? अच्छा, ये सीगल इंडिया मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि टेक्निकल्स में कैश के कॉल्स में इस हफ्ते मेंशन हुआ 1-2 बार। खैर, सीगल इंडिया राजेश सर IPO के समय से फंसा हुआ मामला है, क्या करूं? देखिए, एक शानदार कंपनी है जिसमें 3 साल के रेवेन्यू CAGR में देखेंगे तो बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। EPC की कंपनी है, कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, करीब करीब 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बन रही है देश में, उसको देखते हुए मुझे लगता है भविष्य अच्छा है। इस वक्त थोड़ी गिरावट झेल रहा है बाजार के कारणों से, और इंफ्रा वैसे भी थोड़ा स्लो डाउन पड़ा हुआ है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए. प्लीज कैरी ऑन विथ योर होल्डिंग फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट. संजना मैम क्विकली आज का अगला सवाल. सर मैंने एंजल वन के शेयर्स खरीदे थे. जब मैंने खरीदे थे अगेन मेरा तो गिर ही गया है. तो 2847 के खरीदे थे मैंने. अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वो तो 26 चल रहा है. तो अभी कितने टाइम के लिए मुझे उसको होल्ड करना चाहिए? इसको भी ठीक करिए डायरेक्टर साहब. लॉस हो रहा है राजेश सर 200 रुपए के आसपास. एंजल वन क्या करें? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक है और पिछले जब से वो जेन स्ट्रीट वाली दिक्कतें सामने आई उसके बाद से लगातार प्राइस सभी रिलेटेड स्टॉक में गिरावट आई है. एंजल वन कंपनी अच्छी है, लेकिन इस बार के जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के डेटा आए जून के वो थोड़े से गिरावट के आए. करीब करीब 41.5% क्लाइंट एक्विजिशन में गिरावट आई, लेकिन अभी भी टोटल क्लाइंट बेस उनकी 3.25 करोड़ के ऊपर खड़ी है. और आगे आने वाले दिनों में हमें सबको उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट अच्छा कामकाज करने वाला है. आईपीओ की लाइन लगी हुई है अगले 1-1.5 साल तक. तो इन सब चीज़ों का फायदा इनको मिलेगा और कैपिटल मार्केट इक्विटी कल्चर जैसा बढ़ता जा रहा है. कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड है. तो अगर आपको पैसे की दिक्कत ना हो और इस वक्त बेचने की जल्दी ना हो तो बनी रहे स्टॉक में. मध्यम अवधि में 2800 का टारगेट रखें. तो आपकी खरीद पे पहुंच रहा हूँ तब तो. खैर आप होल्ड कर सकते हो मैम. सुनीता मैम, अश्लेषा मैम, संजना मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए. राजेश सर आप बने रहो. ब्रेक के उस पार आज का SBS स्टॉक पिक लेकर आ. To build anything that truly lasts, it takes time.
को शेयर है एट द रेट ऑफ। ऐसा ब्रेथ इंप्रूव करना शुरू हुई है इंडेक्सेस के रिकवर होने के बाद। खैर राजेश सर के पास चलते हैं। एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट है। राजेश सर, कहां गाड़ी कमाई के मौके नजर आ रहे हैं? सर गाड़ी कमाई का तो पता नहीं, बट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रडार पे है, वो शेयर करता हूँ आपके साथ। ग्रेफाइट इंडिया 6 प्लांट है इंडिया में, एक जर्मनी में, 98,000 टन पर एनम की इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है। इनका मेन रॉ मटेरियल जो है वो नीडल कोक होता है, जो क्रूड का डेरिवेटिव्स है। क्रूड हम सब जानते हैं पिछले 4-5 महीने या उससे भी ज़्यादा से बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो पूरी स्टील इंडस्ट्रीज की एक कावियात चल रही है कि डिकार्बनाइज करने की, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा वो स्टील प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगेंगे, तो वो ग्रीन स्टील कह लीजिए, डिकार्बनाइजेशन कह लीजिए, उसमें इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स की एक बड़ी योगदान रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जापानीज एक कंपनी रेजोनैक ने कुछ दिन पहले अपने चाइना और मलेशिया के प्लांट बंद कर दिए। पिछली तिमाही में नतीजे देखेंगे बहुत शानदार आए थे, और हमें लगता है कि अभी ये जो ग्रोथ का सिलसिला है वो थोड़ा चालू रहेगा। मध्यम अवधि में 700 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी के सलाह है। लीजिए भाई साहब, एक बढ़िया सा फंडामेंटल है। अपना काम है अच्छी चीज सुन के रखने का। बाजार कितना रिवॉर्ड करता है वो बाजार के, सही कह रहे हैं राजेश सर। 700 तक के टारगेट के लिए ग्रेफाइट इंडिया अट्रैक्टिव लगता है इस समय। राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी। 2 मैनेजर, सोनाटा सॉफ्टवेयर और टाटा स्टील, दोनों से बात। To build anything that truly lasts, it takes time.
5. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रम्प टैरिफ के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार, निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 24,800 के पार निकला। बैंक निफ्टी भी हर निशान में लौटा। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी, मिड कैप्स में भी दिखा सुधार। अनुमान के मुताबिक नतीजों से भागा एचयूएल, करीब 3.5% बढ़कर वायदा का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आया जोश, इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल स्टॉक्स का सेंटीमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 5 से 6% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अर्बन लिमिटेड में भी बिकवाली हावी। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स में 10% की तेजी, शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं नवीन फ्लोरिन भी करीब 3% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट्स के बाद इंडस टावर में 4% की गिरावट। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव, प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ का निवेश। 316 रुपए के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47 से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% भागा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आईडीबी कैपिटल के ब्रिजेश हमारे साथ मौजूद है आपको ट्रेड्स बताने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का प्राइस एक्शन मार्केट्स का। तो ट्रम्प के टैरिफ की खबरें कल मार्केट क्लोजिंग के बाद आई। एज एक्सपेक्टेड एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लोअर लेवल से बाजार काफी संभला है और इनफैक्ट अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। निफ्टी अब हरे निशान में लौट आया है, 24,900 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। दिन के ऊपरी स्तर हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए अब दिखाई दे रही है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इस समय अगर देखेंगे तो सेंसेक्स भी हरे निशान में है। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट अब 1.4% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो मार्केट स्टेज हाई पर। मिड कैप्स का नुकसान भी कम हुआ है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 0.5% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स तो अब 1.4% ही नीचे रह गए, यहाँ भी निचले स्तरों से सुधार देखने को मिला है। मार्केट की ब्रेथ अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। 1060 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 1580 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप फटाफट से क्या रुझान देखने को मिल रहा है सेक्टर स्पेसिफिक आज के सेशन में। तो आज के कारोबार में एफएमसीजी सबसे ज्यादा बाइंग है, ऑल क्रेडिट गोज टू एचयूएल। सेंटीमेंट्स यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत बाइंग फाइनेंशियल्स में है, डिफेंस स्पेस में देखने को मिल रही है। गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ है तो आज फार्मा, आईटी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस में नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी सभी पॉकेट्स थोड़ा नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है इस पर करते हैं बातचीत। जेश, गुड आफ्टरनून बताइए। निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, शानदार रिकवरी लोअर लेवल्स आते हुए दिखाई दी है दिन के हाई पॉइंट पर। कुछ ट्रेड बढ़ रहा है यहाँ पर किसी भी इंडेक्स पर? हाय आफ्टरनून। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज जो एक गैप डाउन ओपन होने के बाद जो एक रिकवरी देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शॉर्ट्स यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ रहा है। और आज का जो लो है वो 24,600 के आसपास, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट होता है वो नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में लाइक कल के सत्र के बाद जो फर्स्ट वीक होगा एक्सपायरी का, तो मुझे लग रहा है बाउंस बैक की उम्मीद कर सकता है। पिछली बार जब निफ्टी फिसला था तो 25,200 25,300 का एक लेवल था जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस देखा गया था। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो उसको रीटेस्ट तो डेफिनेटली करेगा, बट देन अगर उसको सस्टेन करके अगर उसी के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग की हम बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक 25,500 25,800 की बात हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बायस मेरा पॉजिटिव रहेगा और मुझे लगता है कि आज का जो लो बना है निफ्टी में वो होल्ड करेगा। यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में हम समझते हैं तो 56,000 का मेजर लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लग रहा है एक तेजी या फिर पॉजिटिव बायस है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर 56,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ही हम थोड़े से कॉशियस या फिर लॉस ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। बट देन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी आज सपोर्ट ले लिया है और कल के दिन भी मुझे लगता है आज का क्लोजिंग में हम ये समझ के चलते हैं कि आज मंथली क्लोज है और आज एक्सपायरी भी है। अगर लास्ट के क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है तो फिर मैं डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको छूने की कोशिश करेंगे।
स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी, कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं? आज ऑटो स्पेस में एमएनएम में काफी अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा था, तो मुझे लगता है एमएनएम का जो स्ट्रक्चर है वो वीकली और मंथली में काफी एक नया बुलिश सेटअप बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एमएनएम में एक तेजी का व्यू हम लेके चल सकते हैं। 200-250 पॉइंट का एक तेजी हम इसमें देखने को मिलना चाहिए और 3150 का हम स्टॉप लॉस लेंगे और 3500 तक का टारगेट के लिए एक एमएनएम में हम ट्रेड करेंगे। दूसरा एक सेटअप जहां पे एक वीकली के चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट जो है वो जियो फाइनेंस पे आया है, तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस ने भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ से 20-25 रुपए का एक मोमेंटम ट्रेड में बना हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 360 तक का एक अपॉर्चुनिटी मुझे जियो फाइनेंस में दिखाई देता है। तो ये दोनों ही कॉल में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग सेटअप बनाया जा सकता है। चलिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल के लिए एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। CNBC आवाज चैनल आप देख रहे हैं और साथ ही जियो फाइनेंशियल दोनों के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। एक बार मिड कैप इंडेक्स का फिलहाल का प्राइस एक्शन तो आपने देखा है, लोअर लेवल से संभला है। अभी 0.5% 1/4% की नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन लेकर आते हैं पॉकेट्स आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं पॉकेट्स के साथ जो तेज है FMCG में पाएंगे। गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर, 1.5% ऊपर ग्लोबल स्पिरिट। इमामी 2.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर डाबर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। FMCG के अलावा बाइंग है केमिकल स्टॉक्स में सुदर्शन केमिकल 2% ऊपर, 2.5% ऊपर नवीन फ्लोरिन, कैमडन फाइन 5% ऊपर, 2% ऊपर आशामुना माइन कैम्प ट्रेड करते हुए आज के कारोबार में। साथ ही जहां पर मोमेंटम है उसमें NBFCs है, इसमें जियो फाइनेंशियल का विजिट हुआ है, लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प, आदित्य बिरला कैपिटल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2.5% तक की तेजी स्टॉक्स में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब एक बार देख लेते हैं वो पॉकेट जो कि कमजोर है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं एनर्जी पॉकेट के साथ। चेन्नई पेट्रो 2% नीचे, 2% नीचे HPCL IOC 2% नीचे, ऑलमोस्ट 2% नीचे एमआरपीएल ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। हेल्थ केयर स्टॉक जो कमजोर है उसमें इफ्का लैबोरेटरीज, आरती फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ल्यूपिन है, जहां 2-2.5% तक की कमजोरी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। IT स्टॉक जो वीक है उसमें बिरला स्टॉक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, KPIT टेक 2% से लेकर 5.5% का नुकसान स्टॉक्स में। लास्टली देखते हैं रियल्टी स्टॉक्स जहां वापस से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट 2% नीचे, 1.5% फिनिक्स मिल्स, ओवरऑल रियल्टी 0.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% नीचे। तो ये स्टॉक्स लोअर लेवल से थोड़ा संभले हैं, हालांकि जब ये लिस्ट आइडेंटिफाई की थी तब 2% तक का नुकसान इन सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा था। तो ये रहा पूरा स्पेस जहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें ट्रम्प के टैरिफ बम का बाजार के कुछ सेक्टर पर असर पड़ना तय है। सब यही जानना चाहते हैं कौन से वो सेक्टर्स जिस पर सबसे ज़्यादा मार पड़ सकती है इस डिसीजन की। इस बारे में खास रिसर्च आपके सामने लेकर आए हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। उनसे समझते हैं कि ट्रंप का लगान किसे करेगा परेशान। बताइए कौन कौन सी पॉकेट से सीधे इम्पैक्ट होती हैं आशीष? बिल्कुल, देखिए एक बार के लिए कंपेटिटिवली देख लेते कि भारत पे जो टैरिफ लगे दूसरे देशों के मुकाबले कितने हैं। तो 25% भारत पे लगा है, चाइना पर एडिशनल ड्यूटीज भी हैं, लेकिन बाकी देश है और जो दूसरे कंट्रीज है, मिसाल के तौर पर बांग्लादेश है, वियतनाम है, इनसे भी ज्यादा फिलहाल के लिए भारत पर टैरिफ्स है। और अभी तो फिलहाल अगर आप देखें तो पेनल्टी की भी बात बाकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के लिए यूएस एज अ मार्केट सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 78% का शेयर है। और टोटल एक्सपोर्ट्स में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 18% के आसपास है। सेक्टर्स में देखिए टेक्सटाइल पर बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 40 से लेकर 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन कंपनीज का आता है, तो ये रडार पर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो B2B कारोबार करने वाली कंपनीज है, मिसाल के तौर पर अरविंद है, वर्धमान है, KPR मिल्स है, इन स्टॉक्स को भी आप रडार पर रखेंगे। ऑटो स्टॉक्स पर इंपैक्ट है और ऑटो एंसिलरी में सोना, BMW और भारत फोर्ड, जहां पर क्योंकि रेवेन्यू आती है यूएस से तो सीधे तौर पर इंपैक्ट है। और केमिकल स्पेस में जो कंपनीज हैं जैसे नवीन फ्लोराइन है, PI इंडस्ट्रीज है, इनकी 20-25% रेवेन्यू यूएस से आती है, तो यहाँ पर भी आपको एक असर देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल्स में अगर आप देखें तो कमिंस इंडिया है, थर्मैक्स है, ये आपके रडार पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ा इंपैक्ट आपको सी फूड, जो फ्रोजन फूड श्रिम्प्स है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का मार्केट शेयर यूएस में ये श्रिम्प वाले सेगमेंट्स में काफी तगड़ा है। तो ये सभी जो स्टॉक्स है यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए। और साथ में अगर आप देखें तो एग्री स्पेस पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि बासमती में जो शेयर है 27% का है भारत का, तो LT फूड्स, KRBL ये स्टॉक आपके रडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पर भी देखें तो कंट्रीब्यूशन काफी तगड़ा है, भारत की पकड़ बहुत अच्छी है सेमी प्रेशियस स्टोन्स में, तो इसी के चलते वैभव ग्लोबल, राजेश एक्सपोर्ट्स और जो दूसरे ज्वेलरी स्टॉक्स हैं ये भी आपकी फोकस लिस्ट में रहने चाहिए।
शुक्रिया आपका आशीष, पूरी रिसर्च लाने के लिए। तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक जो कि सीधे इम्पैक्ट होते हैं, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको बताई गई। लेकिन हम एक बार उस पॉकेट की बात करते हैं जहां पर इस मूड माहौल में बाइंग देखने को मिली है। अच्छा ब्रजेश, एक बार एफएमसीजी पैक को देखिए पूरा, इमामी, डाबर, ये कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स? एक्शन तो अच्छा बना है आज के सेशन में। तो मुझे लगता है कि डाबर में ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, तो अभी उसका जो फॉलो थ्रू बाइंग है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि डाबर में यहाँ से करीब 560 570 तक का एक अपॉर्चुनिटी इसमें खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो डाबर के अलावा मुझे गोदरेज सीपी पे काफी अच्छा फॉर्मेशन लग रहा है। कहीं ना कहीं 1300 1350 के आसपास गोदरेज सीपी जाने की उम्मीद है। और स्लो एंड स्टडी मुझे लगता है एक पिटा हुआ स्टॉक है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और हम इसमें एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। तो गोदरेज सीपी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और डाबर, इस तीनों ही स्टॉक्स में मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। To build anything that truly lasts, it takes time. पैसा लगाना तो सेंचुरी प्लान क्लब प्राइम पे लगा, डूबेगा नहीं, चलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाए, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पैसा लगाना तो सेंचुरी प्लान क्लब प्राइम पे लगा, डूबेगा नहीं, चलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाए, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Specific. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का फोकस आज जो फाइनेंशियल पर है, जिसमें करीब 3% की तेजी है। क्यों दौड़ रहा है स्टॉक, बताने के लिए नितिन मोहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल पर अभी ट्रेड की बात की भी है
ब्रिजेश ने, लेकिन अगर हम प्राइस बिहेवियर देखें इस समय का तो तेजी अपनी होल्ड करते हुए दिन के ऊपरी स्तर पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट इसी स्टॉक की वजह से मूड माहौल बाकी स्टॉक्स में भी बेहतर देखने को मिल रहा है। जो फाइनेंशियल की डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले पूना वाला फिनकॉप एक बार स्टॉक को और देख लेते हैं, और यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ब्रिजेश देखिए एक बार पूना वाला फिनकॉप को और बताइए क्या राय रहेगी आपकी। ओके, सो पूना वाला में बेसिकली इसका जो अंडरटोन है वो मैडम इतना बुलिश नहीं है। सपोर्ट्स पे है 400 के आसपास का जो लेवल सपोर्ट है। मेरा मानना है कि इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कहीं ना कहीं अगर इस 400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 360 370 के आसपास आ सकता है। थोड़ा सा अंडरटोन बेरिश है, बेरिश नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और हो सकता है। ये एडवाइजेबल रहेगा 370 375 के आसपास, वो वहां पे उसको डिसेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, चलिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल में जो तेजी बनी है उसके पीछे कारण क्या है ये समझते हैं। यतिन मोता से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। यतिन बताइए। देखिए, जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ एक बड़ी खबर आई। येस्टरडे बोर्ड बैठक थी फंड रेज के लिए और प्रमोटर्स ने 50 करोड़ प्रेफरेंशियल वारंट्स खरीदने का अनाउंसमेंट किया है और कुल मिला के ये 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्यूजन प्रमोटर फैमिली से होगा। डाइल्यूटेड बेसिस पे जियो फाइनेंस में प्रमोटर होल्डिंग 51% हो जाएगी, जो अभी लगभग 47% के आसपास है। और कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल आ रहा है 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का, इससे कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिलेगा। आपको पता है कंपनी इंश्योरेंस में, ब्रोकिंग बिजनेस में, एएमसी बिजनेस में और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है और कहीं ना कहीं ये फंड इन्फ्यूजन कंपनी के प्लान्स को गति देगा। और अगर हम कंपनी के एंटिटीज की बात करें तो सिक्का पोर्ट्स और जामनगर यूटिलिटीज, ये दो एंटिटीज 25-25 करोड़ वारंट्स खरीदेंगे और जैसे कि मैंने पहले कहा 316 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, शुक्र है आपको ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये जियो फाइनेंशियल की डिटेल्स रही। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है आज के सेशन में। और एचईजी और ग्रेफाइट ये दोनों स्टॉक्स लेकर आते हैं। दोनों स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव आज के सेशन में 5.5% ऊपर ग्रेफाइट है, एचईजी तो 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक्स का नेचर भी ऐसा है कि जब भी चलते हैं तो इसी तरीके की चाल यहाँ देखने को मिलती है। ग्रेफाइट 30 रुपये ऊपर और एचईजी में अब 75 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। बात देखिए दोनों स्टॉक्स को। ब्रिजेश बताइए क्या राय रहेगी। मुझे लगता है कि ग्राफाइट में एक नया टीजी बन सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जिनके भी पोजीशन है मुझे लगता है उनके होल्ड करना चाहिए। 650 के आसपास आने वाले दिनों में ग्राफाइट में एक मूव देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन काफी स्ट्रांग है। एचईजी में एक एक्सटेंडेड मूव है। इसमें मेरी सलाह है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और कहीं ना कहीं 620 630 के आसपास एक बार इसमें प्रॉफिट मान लेना चाहिए। अगर एक बार मार्केट यहाँ से फिसलता है तो फिर यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते 550 530 का सपोर्ट है, वो कहीं हो सकता है कि वो उस लेवल पे एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो ग्रेफाइट को आप होल्ड करें, आप इसको राइड कर सकते हो और प्रॉफिट एचईजी में धीरे धीरे प्रॉफिट बनना शुरू करें। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एचईजी और ग्रेफाइट की। और देखिए किस तरीके का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार मार्केट का पूरा अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं और किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर मार्केट ट्रेड करते हुए एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। क्विकली रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें चल वापस आते हैं। भारत में अब हर कोई एफएनओ सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से एफएनओ सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं एफएनओ गुरुकुल में। To build anything that truly lasts, it takes time.
पैसा लगाना है तो सेंचुरी क्लब प्राइम पे लगा, डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। 20 साल से CNBC आवाज भारत की फाइनेंशियल मार्केट की पल पल की हलचल पर नजर बनाए हुए है, वो भी रियल टाइम। मार्केट्स, कारोबार और निवेश से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी लाता है। हमारी एक्सपर्ट राय आपको सही फैसला लेने में हेल्प करती है। यहाँ है भारत की फाइनेंशियल मार्केट्स की सबसे भरोसेमंद आवाज। हमसे जुड़िए हर दिन लाइव। नुवामा प्रेजेंट CNBC आवाज मार्केट सेंटर, जहां वेल्थ क्रिएशन की होती है शुरुआत सही करने की सोच के साथ। पान बहार, ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। पैसा लगाना है तो सेंचुरी क्लब प्राइम पे लगा, डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। पैसा लगाना है तो सेंचुरी क्लब प्राइम पे लगा, डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। इस स्टॉक पे आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का पूरा अपडेट एक बार सामने लेकर आते हैं आपके सामने। और क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट्स में आते हुए दिखाई दी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अब 0.5% ऊपर निफ्टी आ चुका है 24,900 के ऊपर। इनफैक्ट सुबह जब ट्रम्प टैरिफ के इम्पैक्ट का एनालिसिस हो रहा था, CNBC आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हाफ शायद टफ हो सकता है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से इस मार्केट को देख सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए सुबह ये स्टैंड लेने वाला CNBC आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि मार्केट में शायद रिकवरी भी आ सकती है और उसी तरीके का रुझान देखने को मिला है। जो अनुज ने स्ट्रैटेजी आपके साथ मॉर्निंग में शेयर की थी, उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन सो फार देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड हाफ अब बेहतर होता हुआ, जहां पर एक शानदार रिकवरी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए 24,900 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। सिमिलर प्राइस एक्शन आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिलेगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी लेकर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए अब 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है आज के सेशन में। मिड कैप सिर्फ 250 पॉइंट नीचे रह गए हैं, तो नीचे से एक अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिली है जैसे एक्सपेक्टेड था और उसी तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते MK ग्लोबल के कपिल शाह, सिमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला है। लीड कर रहे हैं ओम 10.5% के रिटर्न्स के साथ, पवन का पोर्टफोलियो 9%, कपिल शाह का पोर्टफोलियो 5%, लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से शानदार रिटर्न्स आते हुए सोफार। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के CFO जगन्नाथन चक्रवर्ती और टाटा स्टील के CEO और MD TV नरेंद्रन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। To build anything that truly lasts,
आपकी कमाई। हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की, और एज प्रॉमिस नो योर कंपनी में दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स। पहले बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर की। नंबर्स आए हैं, नंबर्स पे, आगे के आउटलुक पे, प्लस ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उस पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जगन्नाथन सर हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद दिग्गज टाटा स्टील, जिसके कल बाजार बंद होने, कल दो निफ्टी के नंबर बाजार बंद होने के बाद आए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनसे अपन ने बातचीत कर ली सुबह 10 दमदार ट्रेड्स में। टाटा स्टील से बातचीत अब करेंगे शो में। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन सर भी होंगे अपने साथ थोड़ी देर में, लेकिन नरेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस। ट्रम्प टैरिफ के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 24,850 के निकला पार। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में लौटा। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। मिड कैप्स में भी दिखा सुधार। अनुमान मुताबिक नतीजों से भागा हिंदुस्तान यूनिलीवर। करीब 3.5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी शेयरों में भी आया जोश। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल शेयरों का सेंटिमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 5 से 6% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल और अरविंद लिमिटेड में भी बिकवाली हावी। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स टेक्नोलॉजी में 10% की तेजी। शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं नवीन फ्लोरीन भी करीब 3% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट्स के बाद इंडस टावर में 4% की गिरावट। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी जी का बड़ा दाम। प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ का निवेश। 316 रुपए 50 पैसे के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट्स। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47% से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% भागा। प्रोड्यूसर साहब ने लिखा तो पहली हेडलाइन में था कि टैरिफ के झटके से उबरने की कोशिश में बाजार। अब वो कोशिश नहीं, अब तो हमारी कोशिश का फल आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। हम बढ़िया मजबूती के साथ अब कामकाज कर रहे हैं। जी हां, 1/3% निफ्टी उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट वो शुरुआती 220 पॉइंट के दबाव वाला निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर। मतलब अगर प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब दिखाएं दिन के लो से, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की पावरफुल कमबैक रिकवरी आपकी स्क्रीन पर है। ये तब जब यूएस कहता है 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी लगाऊंगा इंडिया पे, सब कह दिया। और ये देखिए मार्केट्स की रिकवरी। निफ्टी बैंक एक समय 660 पॉइंट दबाव पे था और इस समय 250 पॉइंट मजबूती पे। ये देखिए निफ्टी 300 पॉइंट, 660 प्लस 250, 850 पॉइंट का कमबैक कर चुका है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और आज सुबह आप फ्रंट मुनाफे की तैयारी में क्या चर्चा हो रही थी कि मजा तो तब आएगा जब निफ्टी आज दिन के दौरान इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आए। लीजिए, यह है रेजिलियंस भारतीय बाजारों का। खैर आज एक्सपायरी का दिन है, बढ़िया कवरिंग के मूड अब तक लग रहा है आते हुए। ब्रेथ किसी भी वक्त इवन स्टीवन हो जाएगी।
एक समय जो 1:8, 1:9 डिक्लाइंस के फेवर वाली ब्रेथ थी, अब इस समय 4:5 का रेशियो है। एकदम जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है, ये ब्रेथ इंप्रूव होती चली जा रही है। ये है मूड का असली बैरोमीटर आपकी स्क्रीन पे। कोई पैनिक इनिशियली था, सब खत्म होता हुआ एज द सेशन प्रोग्रेस्ड। आधा अभी 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा है और मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है। बढ़िया है, टच वुड, बहुत बढ़िया बाजार। खैर आप चला जाए सोनाटा सॉफ्टवेयर, दो मैनेजमेंट्स हैं, क्विकली आगे बढ़ूंगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जगन्नाथन चक्रवर्ती सर स्क्रीन पर हैं। आप रूबरू हो ही चुके थे। जगन्नाथन सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। नतीजे स्क्रीन पर आएंगे। हाईलाइट है रेवेन्यूज में सीक्वेंशियली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। रुपए में देखूं तो 13.25% का, डॉलर रेवेन्यू देखूं तो 14.5% का दरअसल क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट। जगन्नाथन सर, ये इंप्रूवमेंट क्या है? वो जो आपने पिछली बार मिले थे तो बातचीत में बताया था 3 लार्ज डील्स आपने बैक करी हैं, उसमें 2 तो प्रोमिनेंट थी। एक वो मीडिया वर्टिकल था शायद उसमें, दूसरा कोई वो हेल्थ केयर वर्टिकल था। ये क्या वो डील जो आपने बैक करी थी उनसे अब धंधा आना शुरू हुआ है, वही पर्कुलेट होकर फाइनेंशियल्स में Q1 की परफॉर्मेंस में, रेवेन्यूज में नजर आ रहा है, या कुछ और बात भी है? Good afternoon all. Thanks for this opportunity. We have mentioned yesterday also in the call that we have some of the tailwinds also with us. Couple of tailwinds are there. Plus there are couple of headwinds also in our in the market at present. The tailwinds are our large deal what we won in April is helping us in the revenue growth. Our investment in banking and BFS and HSS vertical is helping us to get traction in the revenue. And our investment in AI and data is also helping us to get into a newer customer and larger deals also for us. The headwinds for us is, of course, the retail manufacturing distribution vertical is little soft. It was one of the large vertical for us and it is looking very soft. Retail particularly is very, very soft. Maybe because of the policies in US. Or because of the various economic scenarios, inflation and other things. But there is an RMD, there is a softener. The second is one particular tech customer and one particular banking customer have a budgetary softener that is also impacting us. These are the tailwinds and headwinds. We are continuing to pursue and proceed further with our revenue growth. We are still working on various opportunities what is coming in. Pipeline is looking stronger for us. With the investments in AI data, it is helping us to grow the businesses in the market. This actually is the current situation now, and we will always continue to focus on how can we grow, how our investments, where right areas of investment, how it is helping us to get a leverage in getting further progress in our revenue growth. तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ इश्यूज भी हैं। पॉजिटिव्स में बड़ी डील्स जो बैक कर रहे थे उसका फायदा मिल रहा है, बीएफएस में एआई डेटा में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा मिल रहा है। जो दिक्कतें आ रही हैं वो हैं एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल कंपनी के लिए रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें खासतौर पे रिटेल का सेगमेंट, और बाकी वो टैरिफ रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उससे शायद रिटेल सबड्यूट होगा। एक आपने कल कॉन कॉल में भी कहा था, अभी भी बता रहे हो आप, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स का फायदा जरूर मिल रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक क्लाइंट के बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब सर क्या मामला है ये? और ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या, अनसर्टेनिटी यूएस में लिंगर ऑन तो कर ही रही है, अभी भी क्लैरिटी है नहीं। ये सब टैरिफ्स लगाने के बाद यूएस इकोनॉमी के हालात क्या होंगे ये भी नहीं पता मुझे तो ऐसे में जब इतनी अनसर्टेनिटी, तो आई एम श्योर क्लाइंट के बजट स्ट्रिंग्स, पर्स स्ट्रिंग्स वो सब भी टाइटन हो रहे होंगे, या फिर ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रही है एनवायरनमेंट में? So what is happening is that the whole banking as a vertical is looking good. We have a lot of opportunity. We are able to get entry into new customers also. Definitely, particularly in the data space, that we are getting a lot of opening in the banking BFS as a vertical. However, one particular customer is a large bank. Their budget is very soft. Hence, we are not able to pursue on, or that is impacting our overall growth. However, the rest of the customers are okay, and the vertical is doing well. Only one particular case, isolated case, there is an impact of budgetary softness. And overall economy tariff,
definitely we see maybe the impact is in retail is because of the tariff. We have to wait and see how much of other verticals are impacted. At present, we have not seen direct correlation between whatever the performance in the market, but it is added to kind of an uncertainty in the economy, and particularly it has impacted the retail as a vertical. टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट स्क्रीन पर हैं, मार्जिन्स बैंग इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मुझे लगता है रेवेन्यू करीब 20% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। 10,081 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो आपकी स्क्रीन पे 20.5% का जंप है रेवेन्यूज में। प्रॉफिट मतलब नंबर्स लार्जली प्रॉफिट थोड़ा सा बीट है, नंबर्स डिलीवर करते हुए कल शाम से जो नंबर्स आ रहे हैं डिलीवर कर रहे हैं, ये कुछ शेड बेहतर हैं। आज सुबह भी एचयूएल हाईलाइट था, इंपॉर्टेंट नंबर था। टीवीएस मोटर आपकी स्क्रीन पे बढ़िया, देखिए रिएक्शन अच्छा आता हुआ। अच्छा जगन्नाथन सर, एक इशू है, सब कुछ अच्छा था, रेवेन्यू मोमेंटम अच्छा है वो, लेकिन वो मार्जिन्स की प्रोफाइल गड़बड़ाई। इस बार मार्जिन्स में एक तगड़ा मिस है, मार्जिन्स में एक तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या ग्रोथ इन ल्यू ऑफ मार्जिन्स है या ऐसा या कोई और रीजन था मार्जिन्स में इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन का? As I mentioned earlier, we have to pursue through the tailwinds and headwinds for the revenue growth. The more and more what we are able to manage this, the balance between these two, and proceed further on the revenue growth. And if the market condition improves a little bit better, 1 or 2% of surprises in margin, we will be able to overcome that. We are also invested in the right areas, so waiting for the momentum, kind of pursue both headwinds and tailwinds and move forward on the growth. So margins will also improve along with that. We believe that market conditions will help us to improve a couple of percentage, 1 or 2% more in the coming quarter. Our long-term goal of about a low 20s margin, EBITDA margin, we continue to pursue that. We are continue to focus on that. We are executing as per the plan. We are working on the plan, and we are also continuing to focus on how to balance between the headwinds and tailwinds. Based on that conditions, the margins will continue. We'll work towards the improvement of margin and the long-term achieve the long-term goal of low 20%. राधन सर, थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार टाटा स्टील के एमडी और सीईओ साहब से बातचीत। To build anything. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की।
इंडस्ट्री और चलिए क्विकली ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन सर से बातचीत करने की बारी। नरेंद्रन सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। नंबर्स एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। अच्छे नंबर्स थे टाटा स्टील के, चाहे इंडिया ऑपरेशंस देखूं चाहे यूरोप का बिजनेस देखूं। नरेंद्रन सर, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया Q1 नंबर्स पे। अच्छा, यूरोपियन ऑपरेशंस इबीटा पॉजिटिव थे, स्ट्रीट मान के चल रहा था -$5 से +$5, आपके आंकड़े आए +$8। तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे यूरोपियन ऑपरेशंस पे क्या कारण था? तो जैसे हम लोग ने पहले भी बोला है, यूरोप में हम लोग का अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। यूरोप में हम लोग का यूके प्लांट का, जैसे हम लोग पहले भी बोले थे, ब्लास्ट फर्नेस बंद हुआ है एंड नाउ वी आर रीस्ट्रक्चरिंग एंड बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्लोजर ऑफ द हेवी एंड, वी आर एबल टू रिड्यूस अ फिक्स कॉस्ट। सो हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट था ऑलमोस्ट इट वाज £1 बिलियन पर ईयर, वो हम लोग पिछले साल में अबाउट 200 मिलियन पाउंड्स हम लोग कम किया है, और ये साल में भी हम लोग का 200 मिलियन पाउंड कम करने का प्लान है। तो दैट इज गोइंग ऑन, तो दैट इज हेल्पिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इन यूके, एंड उसी वजह से यूके अभी भी नेगेटिव एबिडा में है, पर जो लॉसेस था वो दे हैव रिड्यूस्ड। लास्ट क्वार्टर वाज 80 मिलियन नेगेटिव एबिडा, दिस क्वार्टर इज अबाउट 40 मिलियन नेगेटिव एबिडा, और उम्मीद है कि ये डायरेक्शन में हम लोग वी विल कंटिन्यू टू मूव, and by the end of the year we will certainly be in the positive EBITDA territory. That is the expectation in UK. नेदरलैंड्स में हम लोग का 2 साल पहले एक इशू था, इसीलिए नेदरलैंड्स लॉस में थे 1 साल के लिए, पर अभी उधर भी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में चल रहा है। मार्केट कंडीशंस आर डिफिकल्ट, बट बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोग लिया है कॉस्ट पे नेदरलैंड्स में, इसीलिए नेदरलैंड्स का परफॉर्मेंस में भी आप लोग सुधार देख रहे हैं। तो नेदरलैंड्स इज पॉजिटिव, कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एबिडा एंड कंटिन्यूज टू कीप इम्प्रूविंग। इसका फिर फॉलो अप नरेंद्रन सर, क्या इस पूरे साल FY26 में आप मान रहे हो ये यूरोपियन बिजनेस कंटिन्यू करेगा EBITDA पॉजिटिव ट्रेंड डिलीवर करना? एक्सपेक्ट करें कि साल के एंड तक बढ़िया परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा? तो Q2 में नेदरलैंड्स का परफॉर्मेंस जैसे और यूके दोनों का परफॉर्मेंस जैसे Q1 में था उसी लेवल पे रहेगा। मे बी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा नेदरलैंड्स में, नॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज अभी यूरोप में अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो टैरिफ्स है उसका असर तो दिख रहा है, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं है यूरोप का एक्सपोर्ट जो USA में जाता है 50% टैरिफ अभी भी है, और यूके में भी कुछ कुछ कंडीशंस है। तो इसीलिए आई डोंट सी मच इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड करेंट लेवल्स इन Q2, दो द प्राइसेस विल बी स्लाइटली बेटर एंड कोल प्राइसेस विल कम डाउन, बट ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स का इश्यूज है, ऑल दैट, बट इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इन Q3 and Q4, so that like I said, Netherlands will definitely continue to be EBITDA positive every quarter in this year, but UK, which is today EBITDA negative, will also come to positive territory by the end of the year. नरेंद्रन सर, ये तो यूरोप के बिजनेस की बात हुई, बढ़िया करा आपने उस साइड ऑफ द बिजनेस में। भारत के ऑपरेशन बुरे वो भी नहीं थे, एबिटा लेवल पे परफॉर्मेंस बढ़िया था। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से वॉल्यूम अपटिक्स देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ मिलने को देखने को मिलेगी, प्लस प्राइसिंग कैसी रहेगी? क्या एक्सपेक्ट करें एक स्टेबल प्राइस के साथ वॉल्यूम अपटिक्स देखने को मिलेंगे भारत के कारोबार में? हम लोग का वॉल्यूम्स तो जरूर बढ़ेगा ये क्वार्टर में, क्योंकि Q1 में हम लोग का बहुत सारे शटडाउन चल रहे थे इंडिया में, तो ऑल दो शटडाउन्स आर ओवर, एंड द कलिंगनगर जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसका रैंप अप भी चल रहा है, तो इसीलिए Q2 वॉल्यूम्स विल बी बेटर देन Q1, बट वी एक्सपेक्ट Q2 प्राइसेस टू बी लोअर देन Q1. We expect that the prices realizations will be about 2,000 rupees per ton lower in Q2 compared to Q1. So volumes will be higher, cost will be lower because हम लोग का coal cost will be another $10 lower in Q2 compared to Q1. So there will be a balancing between volume increase, cost reduction, but price reduction as well. So that's the guidance that we are able to give now. Okay, एक लास्ट सवाल नरेंद्रन सर, आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के, आपके केपेक्स के प्लान्स इस साल FY26 के लिए, और किस तरह के कैश फ्लोज इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या पेंसिल इन कर रहे हो? भी ये साल का भी गाइडेंस जो है कैपेक्स का 15,000 करोड़ का है, 15-16 हज़ार करोड़ का जो हम लोग गाइडेंस दिया है वहीं पे रहेंगे।
of which 80% is going to India and 20% is going to Europe. India में है ज़्यादा से ज़्यादा कलिंगनगर expansion में चल रहा है. While the expansion is almost complete in terms of facilities, जो payments है जो वो सब will be reconciled and paid during the year. So hence a capex of 15,000-16,000 crores. But the net debt will come down by the end of the year that we have guided, and we'll stick to that plan. ओके नरेंद्र सर थैंक आज खैर स्टॉक इतना अच्छा क्योंकि ग्लोबल मूड मॉल वैसा है वैसी रिएक्शन है अदरवाइज नंबर्स वाकई अच्छे नरेंद्र सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस नोट पर एक काम करा जाए आज के शो को यहीं समेटते हैं ब्रेक के उस पार देखिए कमाई का अड्डा हम तैयारी कर रहे हैं आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की तो एक इंटरेस्टिंग सेशन का लास्ट पड़ाव है उसके लिए बढ़िया सा शो लेकर आएंगे To build anything that truly lasts, it takes time.
आपके आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, यूएस का टैरिफ प्रहार भारतीय बाजार पर बेअसर होता हुआ साबित दिख रहा है और देखिए जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में आधा फीसदी की तेजी, निचले स्तरों से 300 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 24,909 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी काफी हद तक सुधार दिखाया है, ब्रेथ सुधर गया और जो सारे ही सेक्टर्स आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे थे एफएमसीजी को छोड़कर, अब देखिए बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी भी फ्लैट हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में सुधार तो दिखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक्सपायरी का दिन अब यहाँ से मार्केट कैसे टर्न होगा, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट है, सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस। ट्रम्प टैरिफ के झटके से उबरने में कामयाब बाजार, निचले स्तरों से निफ्टी करीब 300 पॉइंट उछलकर 24,900 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दिखा सुधार। अनुमान के मुताबिक नतीजों से भागा एचयूएल, शेयर करीब 4% ज्यादा उभार कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी शेयरों में भी आज आया जोश, इंडेक्स करीब 2% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल शेयरों का सेंटिमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 5 से 4% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद लिमिटेड में भी बिकवाली हावी। जो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव, प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। 316 रुपए 50 पैसे के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट्स। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47 से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% भागा। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स में 10% की तेजी, बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं इंडिगो भी करीब 3% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद इंडस टावर में 4% की गिरावट। वहीं दूसरी ओर 50% बढ़ा अंबुजा सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखा सुधार। कराएंगे एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के Q1 के नंबर्स, करीब 2% बढ़ सकता है मुनाफा। वही रेवेन्यू में 0.4% की बढ़त संभव, लेकिन मार्जिन पर दबाव मुमकिन। वहीं टाटा पावर और यूपीएल समेत वायदा की 7 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। वर्स्ट केस सिनेरियो आज प्राइसिंग हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक होगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आज मंथली एक्सपायरी भी है। 2 दिन से मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज रही है। ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज में नॉर्मली आप एक्सपायरी वाले दिन सीरीज के एकदम एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, तो आज हम सीरीज के लो को हिट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि शुरू में थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस लगे हैं, थोड़ी सी मार्जिन कॉस्ट ट्रिगर हो, ये सब हो सकता है। भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और आई थिंक इस चीज में किसी को ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, शायद उतनी ही जरूरत या उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ये सब चीजें स्पीड ब्रेकर की तरह आती रहेंगी। पहले भी आई हैं, हमने कई बार देखी है और 10 साल के बाद आपको ये दिखाई भी नहीं देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फुट नोट की तरह लिखा हुआ दिखाई देगा ये टैरिफ वाला पूरा का पूरा जो मामला था। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बिना डरे डिप्स में बाइंग करिए। सुबह ये स्टैंड लेने वाला CNBC आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि मार्केट में शायद रिकवरी भी आ सकती है और उसी तरीके का रुझान देखने को मिला है। जो अनुज ने स्ट्रैटेजी आपके साथ मॉर्निंग में शेयर की थी, उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन सो फार देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड हाफ अब बेहतर होता हुआ, जहां पर एक शानदार रिकवरी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी से ट्रेड करते हुए CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन पर। अनुज जी, अभी प्रोमो में भी देखा हमने और सुबह सुन भी रही थी मैं आपको, और आपने जिक्र किया था इस बात का कि आपकी पर्सनल फीलिंग, इंट्यूशन बता रही है कि मार्केट इन ग्रीन ही क्लोज होगा, और जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, काबिल तारीफ आपकी एनालिसिस। सबसे पहले ये बताइए कि ये
पकड़ आपको कैसे हुई कि मार्केट आज शायद रिकवरी दिखाए मार्केट? नहीं देखिए श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। फ्रैंकली बोलूं तो एक व्यू ये था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव हैं और ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखें। और अगर ट्रेडिंग में भी अगर आप व्यू ले रहे हैं तो शायद एक बार आज ग्रीन दिख जाए आपको, इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द मार्केट की जो अनिश्चितता थी कि टैरिफ डील, देखिए मार्केट ने अब वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया है। अब मार्केट में आज सुबह खुलते ही 200 पॉइंट जब नीचे खुले, और ऑलरेडी जब हम इतना नीचे खुले थे, एक तरीके से हमने वर्स्ट, अब हमारे लिए वर्स्ट क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं हम 25% टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, जो मर्जी लगा लो। देखिए हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ट्रेड डील नहीं हुई है, इसका रीजन ये है कि हम अड़े हुए हैं, भारत अड़ा हुआ है। ये अमेरिका अड़ा हुआ है कि बात नहीं, भारत अड़ा हुआ है। बाकी सब देश मान गए हैं, आप 25% लगा दीजिए, कोई कह रहा है 20% लगा दीजिए, कोई कह रहा है 35% लगा दीजिए। जो कमजोर देश हैं वो मान गए हैं इसलिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम इक्वल फुटिंग पर खड़े हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान को लेकर, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच थी। वो जो लाइन उन्होंने लिखी थी ना कि मे बी इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक खींच थी कि इंडिया क्यों मेरे टर्म्स पर डील नहीं कर रहा है। और हम एक बहुत क्लियर है, हम अपने हिसाब से डील करेंगे, नहीं करना तो मत करिए। अब देखिए जिस तरीके से जो सामान भारत से अमेरिका जाता है, इवेंचुअली अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वो टैरिफ किसको देना होगा? वो अमेरिकन बायर को ही देना होगा। इवेंचुअली वो अमेरिका के ऊपर ही नुकसानदायक होगा, हमारे ऊपर भी नुकसानदायक होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको सह लेंगे, ठीक है। बाकी फार्मा, IT वैसे ही उस टैरिफ के उससे बाहर है, तो इसके लिए कोई इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पर। और ठीक है, ये एक जो आपने बात कही कि सुबह हम जो मैंने व्यू लिया था कि शायद हम ग्रीन में ही बंद हो जाए, वो थोड़ा सा मेरा एक इंट्यूशन भी था। कई बार मैंने देखा है हमारी मार्केट्स में ब्रेग्जिट वाला दिन था, हमारी मार्केट में डीमोनेटाइजेशन वाला दिन था, कई ऐसे दिन देखे हैं मैंने जहां पर हमारी मार्केट ने खुलते ही बॉटम बनाया है और उसके बाद मार्केट ग्रीन में भी आया है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने आज सुबह एक व्यू लिया था कि हम ग्रीन में भी आज शायद एक बार के लिए आ सकते हैं। अब आखिरी के 1-1.5 घंटे में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है श्रेया। मैं वैसे फ्रैंकली बोलूं तो आज मैं मिस कर रहा हूँ वहां पर होना, क्योंकि आज मैं अगर सुबह होता ना तो मैं आज मैं एक लाइन लेने वाला था, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं आज सुबह होता तो ये जो मैंने लिया है कि हिंदुस्तान का दम देखो, मैं सुबह एक लाइन लेने वाला था कि आज हिंदुस्तान का दम दिखाएंगे हम। और ये भारतीय मार्केट ने आज जो किया है वो ये दिखाया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन हमारा मुल्क भी, हमारा देश भी काफ़ी स्ट्रांग देश है, और हम वो करेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है, ना कि जो आपके लिए। बाकी अनुज, जब आपने वो पाकिस्तान वाला ट्वीट भेजा था ना, तो मुझे एक ही चीज़ याद आई थी, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। बिल्कुल। पर अनुज, एक चीज़ और हुई आज। आप देखिए, एक तो वर्स्ट जो ये प्रश्न मैंने आपसे सुबह भी किया था कि ये 25% का टैरिफ विद एडिशनल पेनल्टी क्लॉसेस, क्या एक अंश, देखिए हमारी अर्निंग थोड़ी सी खराब थी इस बार, एक अंश का वर्स्ट केस प्ले हो चुका है। और दूसरी चीज़ अनुज, आज आप देखिए HUL नवंबर के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे, आज जिस प्रकार की FMCG की अर्निंग्स रही, HUL के नंबर्स, ये हमारे लिए हाथ में एटलीस्ट एक पॉजिटिव और है ना आज। आप मानते हैं इस बात को? जिस प्रकार का मैं एक चीज़ बताऊं, बिल्कुल मैं एक चीज़ बोलूं, इसमें कई बार देखिए हम गलत पढ़ते हैं, लेकिन आज जो मार्केट का बिहेवियर है, अब आज का जो लो है मार्केट के लिए वो अब सैक्रोसैंक्ट है, और यहाँ से अगर ये लो ना टूटे तो मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी कि एक खराब सीरीज हमने पुट बिहाइंड की। आज हमने सीरीज का लो भी लगाया, और अब वो सीरीज का जो भी लो है, आज का जो भी लेवल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं मार्केट को मिनट बाय मिनट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन जो भी आज का लो रहा वो अब आपका एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप होगा। जो बात आपने लीवर के संदर्भ में कही, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। एशियन पेंट्स के नंबर भी बुरे नहीं थे वीरू, अगर ये मार्केट अच्छी होती तो एशियन पेंट्स भी आज अब तक 2400-2500 के ऊपर पहुंच चुका होता। तो FMCG की जो बड़ी कंपनियां, उनकी अर्निंग्स मुझे खराब बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, कोटक की अर्निंग्स खराब थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया था मार्केट के ऊपर, लेकिन ठीक है ओवरऑल अभी भी मेरा व्यू यही है मार्केट को लेकर कि आज जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर मार्केट ने दिया है, और जब भी मार्केट खराब खबर पर चले वो मार्केट एक तरीके का एक आपको हार्ड बॉटम बनाता है। तो आज मार्केट ने हो सकता है हार्ड बॉटम बनाया, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ये व्यू रहेगा। और लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ से है, आज मैं सच बताऊं तो मैं हालांकि छुट्टी पर हूँ मुझे, लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए सुबह के मेरे उस व्यू के ऊपर कि उन्हें उससे फ़ायदा हुआ। मुझे इस चीज़ से खुशी है कि आज हम पैनिक नहीं करें, आज हम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, आज हम कैपिटुलेट नहीं करें, क्योंकि आज अगर हमारी मार्केट गिर जाती तो हेडलाइन बनती सुबह सुबह कि अमेरिका के टैरिफ टेंट्रम से भारतीय मार्केट का बुरा हाल।
अब क्या हेडलाइन बनेगी सोचिए, अगर 1-1.5 घंटे मार्केट टिका रहा तो कि इंडिया शोज अमेरिका वी डोंट केयर, ठीक है ना, मतलब ये, और एंड ट्रम्प मोर देन अमेरिका इट्स ट्रम्प। देखिए एक चीज समझ लीजिए, खुद डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज्यादा नुकसान अपने खुद के देश का कर रहे हैं, ये चीज उनको रियलाइज होगी, बहुत जल्दी रियलाइज होगी। और मैं तो एक और चीज बता रहा हूँ आपको वीरू, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज शाम को ही उनका एक और ट्रूथ आ जाए कि भारत डील के लिए तैयार हो गया है, भले ही वो खुद डील के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन डील होगी भारत के साथ, और अच्छी डील होगी, 25% से कम टैरिफ पर डील होगी, ये भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। अब हेडलाइन भी यही बन रही है कि यूएस का टैरिफ टेंट्रम का प्रहार भारतीय बाजार पर बेअसर होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, इम्पोर्टेंट दिन में आज हमारे साथ आप जुड़े और अपनी एनालिसिस रखे आपने, और लोगों को ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। शुक्रिया आपके समय के लिए। वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून। डिस्कस कर रहे थे जो 25% का टैरिफ भारत पे लगाया अमेरिका ने, उसको तो हमने अब इधर का उधर कर दिया, एज इफ वी डोंट केयर नाउ। लेकिन लेवल्स कैसे लग रहे हैं अब आपको? अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, एक्सपायरी का दिन भी है, तो कैसे प्ले करें इस मार्केट को? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? जी हाँ, देखिए श्रेया, पहले निफ्टी बात करते हैं। सुबह का बेस मन लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए श्रेया, लगभग परसों हमने इसी लेवल पे अपना शॉर्ट कवर किया था, इसी लेवल पे। बेस वन क्या था? दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब उस बेस वन पे 3 चीजें डिफाइंड थी, 100 डे मा, 20 वे मा, और मोर स्पेशली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 24,600, 24,500 पुट राइटर्स के जोन थे। मेरा क्लियर कट सेंस था, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, बाय डिप्स, शुरुआती 1 घंटे के डिप्स को बाय करिएगा थोड़ा देख कर, और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं, थ्रू नेक्स्ट वीकली कॉल्स। डेटा साहब बेस वन ले आइए स्क्रीन पे, वो बेस वन को डिप को बाय कीजिएगा। श्रेया, वो पॉइंट था 24,640 और 24,588। गया निफ्टी एग्जैक्टली उसी ब्रैकेट को छुआ, और उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पे आप डे हाई पे। श्रेया, जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये क्लोजिंग, श्रेया ये प्राइस एग्जैक्टली 943, यहां पर निफ्टी के इस वक्त 2 एवरेजेस गिर रहे हैं, 2 एवरेजेस। मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में कहा था कि मेरा व्यू था बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। मैं 850 पर न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी पर, जहां पे प्रीवियस क्लोज था, ट्रेड को लाके छोड़ दूंगा, बट अगर ये निकला तो अब हम इस प्राइस पे 951, श्रेया ये है 50 और 10 दोनों। अब आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर 955 के ऊपर सेटल हो गए ना श्रेया, तो ये क्लोजिंग आपको कुछ भी दे सकती है, इवन 25,036 पे। अब 25,036 क्या है? 25,036 इज योर फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट मैम श्रेया, आप यकीन मानिए, 650 से 750, 750 से 850, 850 से 950, 300 पॉइंट एक डे ट्रेडर के लिए और सिंगल डे इज क्वाइट इनफ। बहुत अच्छा रिवॉर्ड है वो। लेकिन जो सेकेंड हाफ का कन्विक्शन आया ना श्रेया, वो आया था बैंक निफ्टी से। 12 बजे मैंने अपनी कमेंट्री में एग्जैक्टली कहा, नाउ कीप अ आई ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 12:18 पर अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एट 56,113 क्रॉस कर रहा था। मैंने कहा था इस पर नजर रखिए, ये देगा आपको सेकंड हाफ के लिए रिवॉर्ड। श्रेया, वहां से करीब 250 पॉइंट चल चुका है। मैं निफ्टी पे एक बात कहता हूं, अगर आपने एक डे ट्रेडर के तौर पे सुबह के डिप को बाय किया, अच्छी बात है, अच्छा रिवॉर्ड आपके पास है, बुक भी कर सकते हैं आप, बट याद रखिएगा 950, 955 अगर इसके ऊपर सेटल हो गए तो आपको 25,050 भी मिल सकता है। दैट इज फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन शायद मेन बात यह है कि आपने आज 100 डेमा को सेकेंड टाइम डिफेंड किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया। बिल्कुल। निफ्टी की तो ये कुछ लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रेटेजी? हालांकि आपने जिक्र किया बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जिसकी वजह से आपका कन्वेंशन और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी पे? ये तेजी टिकाऊ लग रही है आपको? कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? देखिए श्रेया, अगर आप कंपैरिजन करें निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक अभी भी ऊपर है। हमने आज निफ्टी पे पुल बैक लिया 100 डेमा से, निफ्टी बैंक ने पुल बैक लिया, निफ्टी बैंक ट्रेड करा 50 डेमा पे, बैक लिया, निफ्टी बैंक ट्रेड करा 50 डेमा पे। दैट्स सफिशिएंट टाइम इन डिफरेंशियल, बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। डायरेक्टर साहब तेरा बेस लेके आइएगा। देखिए श्रेया, आज क्या था, ये जो गैप डाउन था ना 200 पॉइंट का, ये निफ्टी बैंक को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल रहा था जिसमें ये जाना नहीं चाहता था।
डायरेक्टर साहब जरा वो पिछले सेशन का पिरामिड लेके आएंगे, 56,000 पे पुट बिकी हुई थी, गजब तरीके से बिकी हुई थी 56,000 की पुट। और इसी जोन में 56,000 के आसपास ये देखिए श्रेया, ये वाइल्ड ऑरेंज कैंडल, वाइल्ड ऑरेंज कैंडल गजब बिकी हुई थी पुट ये। और सुबह जरा प्लीज बेस लेके आइए, मैंने एक कमेंट्री में क्लियरली बात की थी कि इफ वी सस्टेन अबव बेस 1 दैट्स 50, दैट्स पुट राइटर जोन, एक इमीडिएट शार्प फॉल आएगा टुवर्ड्स बेस 1। मैंने उस पर लिखा था आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होना पड़ेगा उसके लिए। बेस 1 अगर टूटा तो बेस 2 तक का डिप 585 एग्जैक्टली शेयर यही लो है। और कमेंट्री में 4th लाइन स्पेशली लिखी थी दैट सेकंड बेस is quite capable, is more than capable for generating a strong pullback towards again 56,000। गया बाजार बेस 2 को टेस्ट किया, फिर 56,113 तक का पुल बैक, और अब 113 पे 12:18 पे उसने 50 डेमा पार कर लिया। श्रेया, इस आंकड़े के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा 362 365 के ऊपर सस्टेन कर गए तो बैंक निफ्टी का अगला लक्ष्य बनेगा करीब करीब 56,500 से 56,590, जहां पे 50 डिमा है। पर श्रेया, मैं आपको फिर बात बोल रहा हूं, एज अ डे ट्रेडर आप पैसा बना चुके हैं। इस क्लोज का मतलब अगले सीरीज के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा होगा। जो अनुज में बात कर रहे थे ना श्रेया, एचयूएल का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एचयूएल नवंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लस्टर पे खोल गया। तो नाउ आपके पास क्या है? आपके पास स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी है, स्ट्रॉन्ग फार्मा। तो ये जो आज कैंडल्स क्रिएट हुई हैं 50 डेमा के ऊपर, बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, 100 डेमा पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, इसका इम्पैक्ट अगली सीरीज पे ज्यादा होगा। वो बड़ा कैच है यहां से श्रेया। अगली सीरीज के लिए जो कैंडल्स बनी है एचयूएल, फार्मा, निफ्टी के अगली सीरीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और लेवल्स बता दिए गए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि रिकवरी अच्छी हुई है मार्केट में। तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, कहां आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। केन्स टेक नतीजे काफी अच्छे थे, नतीजे कैसे रहे बोर्ड मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। 10% के करीब आज केन्स टेक उछल गया। डिलीवरी 4% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर। एचयूएल अगेन रिजल्ट के बलबूते यहाँ पे दौड़ गया, ये 4% से ज्यादा। जियो फाइनेंशियल में जो बड़ी खबर आई उसके बाद देखिए 3.5% के करीब यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। इटर्नल पूरा एफएमसीजी और कंजम्पशन स्पेस की बात करें तो वहाँ पे आज बाइंग नजर आती हुई दिख रही है। 2.5% करीब इटर्नल चढ़ गया। कोटक महिंद्रा बैंक साथ दे रहा है आज की रिकवरी में, 1.5% की तेजी यहाँ पे। एफएमसीजी पैक तो है ही रडार पर, आईटीसी 1.5% और नेस्ले इंडिया भी यहाँ पे 1.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहाँ पे थोड़ा प्रेशर था, आरती इंडस्ट्रीज, इंडस्टार, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर। 5.5% की गिरावट के साथ आरती इंडस्ट्रीज कारोबार करे, इंडस्टार में भी 4.5% की गिरावट। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर और बिरला सॉफ्ट में भी आज सुस्ती 4.5% और 3.5% के करीब आपको देखने को मिलेगी। अडानी इंटरप्राइजेस थोड़ा ड्रैग कर रहा है, 1.5% की गिरावट। डॉक्टर रेड्डी टूट गया 1%, रिलायंस भी 1% के करीब गिरता हुआ, और भारतीय एयरटेल भी आज आप देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहा है थोड़ा गिरावट में, 1% आधी फीसदी के करीब भारतीय एयरटेल में गिरावट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और रुचित जैन से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको एचयूएल में तेजी क्यों है। 2:20 पर बोर्ड रूम में नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केन्स टेक के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम पी संपत। 2:30 बजे जुलाई ऑटो सेल्स का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:45 पर आईटीसी के नतीजों का प्रीव्यू लेकर आएंगे मंगलम मालू, साथ ही टाटा पावर के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष चतुर्वेदी, और कंचन नौटियाल बताएंगे एलआईसी हाउसिंग के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। 3:05 पर यतिन मोता आपको बताएंगे डीलिंग रूम के किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पे वीरेंद्र से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए पैनल आपकी स्क्रीन पे है, शेयर से आपने क्रम समझा और ट्रेंडिंग स्टॉक समझे। अब आते हैं आज के स्टॉक्स पे। प्रकाश, सो फार सो गुड। और आज सुबह से अगर आप देखें, कभी कभी बाजार जब चलता है ना तो अच्छा लगता है, रोज ही अच्छा लगता है जब बाजार चलता है, लेकिन कभी कभी सुकून मिलता है। आज वो सुकून वाला दिन है ना प्रकाश? ट्रेड क्या रखा था? बिल्कुल ऐसी बात है, अगर ट्रम्प टैरिफ और पेनल्टी के बाद ही मार्केट चलता है तो डील क्यों करना, चलने को ना। बिल्कुल स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डिलीवरी। 426 और 27 के बीच में ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 420 का।
नियर टर्म टारगेट 440 टू 445 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। आज का जो बार बना है बढ़िया बार बना है, हो सकता है ये आज भी हो सकता है एक स्पिल ओवर ट्रेड कल तक भी बन सकता है। यस, डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। डिलीवरी डे हाई पर स्ट्रॉन्ग काउंटर यहाँ पे खरीदारी की राय गावस्कर की तरफ से। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए गोदरेज सीपी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई है 1300 रुपए उसको वापस टेस्ट कर सकता है, इसलिए गोदरेज सीपी में 1239 के स्टॉप लॉस से 1300 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। कैश लेवल्स हैं, चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। अगस्त मंथ का 1260 का कॉल ऑप्शन 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए के टारगेट सेट करना है। जी हाँ, देखिए गोदरेज सीपी की कॉल में एक बहुत बड़ा चीज़ छुपी है जो मैंने अनुज से भी प्रश्न पूछा था, एक्चुअल की मीनिंग। जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी एफएमसीजी की जरा प्लीज कैंडल लेके आइएगा। कैंडल यस, यानी 1 फरवरी को जब बजट आया था, जब उस दिन के कैंडल के अनुपात में ये, हालांकि कैंडल फिर भी कम है, बट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्राडे स्विंग ऑफ एफएमसीजी इन लास्ट आई थिंक 9 अप्रैल के बाद। और इस कैंडल का वेटेज महत्व इसलिए है क्योंकि इस कैंडल के पीछे खड़ी है अर्निंग्स। याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम जितने भी पुलबैक की बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे बड़ा कारण है सुबह 9:15 से लेकर लगभग 12:10 तक बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया सिंगल हैंडेडली एचयूएल ने। तो एचयूएल की इंपॉर्टेंस कल समझिएगा आप, जब हाउस व्यूज आएंगे, श्रेया से बात कर रहे होंगे, आशीष से बात कर रहे होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पोस्ट अप्रैल। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मॉर्निंग में ब्रिटानिया दिया था, मैं उसी के साथ जाऊंगा। ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, इनफैक्ट कल के सत्र में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी और आज एक हम स्ट्रॉन्ग फॉलोअप देख रहे हैं। स्टॉक 50 डेमा से रिगेन कर रहा है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और यहाँ पे हायर हाई लूज बन रहे हैं, तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसे बाय करें। 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5950 के। ट्रेंडिंग स्टॉक है ब्रिटानिया और पूरा एफएमसीजी पैक ही आज ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो ब्रिटानिया खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से। प्रशांत जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी दरअसल मेरी पिक भी ब्रिटानिया थी, बट क्योंकि अमित जी ने वो डिस्कस कर लिया तो मैं चेंज करना चाहूंगा और पीआई इंडस्ट्रीज के साथ रहना चाहूंगा। यहाँ पे जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था वो रिटेस्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है और अभी करीबन 4250 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 4195, 4195 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 4350, 4350। सही बात है, बिल्कुल सही करा आपने प्रशांत जी। एक ही ब्रिटानिया कितने लोग ले जाएंगे अपने साथ? अब चॉइस आपको चेंज करनी पड़ी, आप पीआई इंडस्ट्रीज पिक कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पीआई इंडस्ट्रीज। सचिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मारुति में काफ़ी दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड मूव नज़र आ रही है, बट अगर हम इसका डेटा पिछले 3 दिनों से देखें तो एक अच्छी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है डिस्पाइट ऑफ मार्केट वीकनेस। यहाँ पर कहीं भी रिवर्सल्स नहीं हुए थे, ब्रेकडाउन्स नहीं हुए थे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से इसने एक बेस को रिस्पेक्ट किया है 12300 के, वहीं से वापस अपमूव शुरू हुई है, तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगस्त सीरीज में ये रेंज का एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, जो इम्पोर्टेंट एवरेज सपोर्ट है लगभग अराउंड 12400 के आसपास अभी फिलहाल शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 12,380 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी मारुति के अगस्त के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ही लगभग अराउंड 12,770 से 13,000 तक की 12,900 तक की एक अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो जाए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 12,380 पे लगाना है। मारुति सुजुकी फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। तो टेक्निकल कॉल्स हमने अब सब पूरी कर ली, एक करके आपके स्क्रीन पर रख दे ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। गाबर सर ने डिलीवरी चूज किया, काफ़ी शानदार काउंटर। यहाँ पे खरीदारी की राय 445 तक के टारगेट देख रहे हैं, 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं आप गोदरेज सीपी पर हाथ लगा सकते हैं, पूरा पैक ही आज यहाँ पर ट्रेंडिंग है और यहाँ पे खरीदारी की राय टारगेट 1300 के तक देख रहे हैं वो। और स्टॉक ये देखिए, ये
वायदा का है वो पहले कैश का था। अमित जी कह रहे हैं ब्रिटानिया पे खरीदारी कीजिए और यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे 5750 तक के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। प्रशांत जी ने पीआई इंडस्ट्रीज चुना, पहले पिक तो हालांकि उनकी ब्रिटानिया थी। यहाँ पे खरीदारी की राय 4350 तक के टारगेट प्राइस, 4195 का स्टॉप लॉस। सचिन जी ने अभी पिक किया मारुति सुजुकी के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से 12700 के टारगेट, 12380 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल ये टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। अब चलते हैं फंडामेंटल आइडिया के लिए आशीष चतुर्मोता जी के पास। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है, कहाँ पे लग सकती है बेट? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए हमें जो स्टॉक पसंद है वो डोमेस्टिक थीम के ऊपर फोकस्ड है और हेल्थ केयर पे फोकस्ड है। और वहाँ हमें लगता है कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो कंपनी है वो हमें काफ़ी पसंद है, क्योंकि कंपनी का अगर से आप देखेंगे तो जो ये हॉस्पिटल बिजनेस में है और ऑलमोस्ट 19 हॉस्पिटल्स इस समय पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। करीब 4800 बेड्स की कैपेसिटी है और आने वाले समय में 2600 नए बेड्स ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। मोटा मोटी हमारा मानना है कि 7800 बेड्स की कैपेसिटी ये कंपनी क्रिएट कर लेगी। साउथ इंडिया के अंदर में एक तरीके का नंबर 1 प्लेयर एस्टर डीएम है। केरला में पर्टिकुलरली दे आर नंबर 1। तो ये बहुत ही और इन रीजन्स में आप देखेंगे जो रियलाइजेशन वो काफ़ी इंप्रूव आते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड अगर से आप देखते हैं इस कंपनी का तो करीब 44,000 रुपीज़ के आसपास आता है, जबकि यही नंबर इसी हॉस्पिटल चेन में हमने देखा था कि जो नंबर थे वो 32-33,000 के आसपास हुआ करते थे। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड पे हमें देखने को नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो क्लियरली एक मार्जिन के अंदर में भी हमें लगता है कि इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को नजर आएंगे। ऑल इन ऑल ये स्टॉक अगर से आप देखिए वैल्यूएशन की टर्म पे तो 33-34 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इन लाइन विद द पीयर्स है। और जिस तरह से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर स्टॉक ने 580 पे एक बहुत मजबूत बेस बनाया है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 720 रुपये तक के स्तर आपको एस्टर डीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 720 तक इस तरह एस्टर डीएम में फिलहाल ये टारगेट देके चल रहे हैं आशीष चतुर्मोता जी। एस्टर डीएम आपको फोकस में रखना चाहिए, 720 तक का टारगेट, 580 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। एफएमसीजी पैक का आज फोकस में आप देखिए जिस तरीके से पूरा पैक 1.5% की तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ज़्यादातर आप कॉल्स भी देख लीजिए तो गोदरेज सीपी साथ ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स उठाए गए इस स्पेस से, लेकिन एचयूएल आज फोकस में शानदार नतीजा है। इसकी 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको डे हाई पर एचयूएल। लेकिन बाजार को ऐसा क्या पसंद आ गया, नतीजों में क्या था, ये समझने के लिए यतिन जी के पास चलते हैं। यतिन जी बताइए, एचयूएल आज 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ है। गुड आफ्टरनून श्रेया। और अगर हम एचयूएल के नंबर्स की बात करें तो अनुमान से स्लाइटली बेटर आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ भी है वो 4% आई है, जबकि अनुमान 3 से 4% के आसपास था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यूज़ में 4% की बढ़त और मुनाफे में 8% की बढ़त। और ऑब्वियसली जो एफएमसीजी कंपनियों की क्वार्टर की शुरुआत में कमेंट्री थी उस तर्ज पे एचयूएल को लगता है कि आने वाला जो फेस्टिव सीज़न है, आने वाला जो मॉनसून सीज़न है, उसके कारण जो कंजम्पशन देखने को मिल रहा है खास करके रूरल मार्केट्स में, उसके कारण आगे जाके मार्जिन्स और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार देखने को मिलेगा। अगर हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो होम केयर सेगमेंट में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ब्यूटी और जो ओवरऑल वेलनेस सेगमेंट है यहाँ आपको 5% का ग्रोथ देखने को मिला। पर्सनल केयर में 6.5% और फूड सेगमेंट में लगभग 4.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। तो सेगमेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा। इनफैक्ट मैनेजमेंट को लगता है कि डिमांड अब स्टेबल है और आगे जाके आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्जिन जो है 22 से 23% के आसपास का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने और वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस आगे जाके मैनेजमेंट का रहेगा। शेयर में रिजल्ट्स के बाद 4% की बढ़ोतरी देख रहे हैं एफएनओ सेगमेंट में और एफएमसीजी सेगमेंट में, दोनों में ही टॉप गेनर ये बना हुआ। जी यतिन, शुक्रिया आपका। अभी आपसे और भी कुछ पहलुओं पर बातचीत करनी है, बट यस आज के हमारे इस पूरे बाजार का एक महत्वपूर्ण अंश, देखिए सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स का मतलब नहीं होता है। बात ये होता है अर्निंग्स कैसी थी, पूरे सेक्टर को कहाँ जाके खड़ा कर रही हैं। मीनवाइल सन फार्मा के नंबर हैं और मेरे ख्याल से मुनाफा तो थोड़ा सा अगर आप देखें डाइवर्जेंस है यहाँ पे 2836 करोड़ से घटकर करीब 2280 करोड़ के आसपास रहा, जबकि एक्सपेक्टेशन करीब 3180 करोड़ रुपये की थी। और टॉप लाइन में करीब 13,391 करोड़ रुपये वर्सेस 12,653 करोड़ रुपये।
बट मैं यूएस बिजनेस का जो एग्जैक्टली अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ है वो देखना चाहूँगा। बट प्राइमा फेस से अगर आप देखें तो देखिए मैं कल भी बात आपसे ये कह रहा था, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। इसकी प्लेसमेंट मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में सबसे म्यूटेड, कहाँ दिवीज लैब, कहाँ सन फार्म, ये कहाँ आपका लॉरस, मैं नॉट एग्जैक्टली इट्स अबाउट सेगमेंट, मैं सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्लेसमेंट बहुत अगर आप देखें इसकी नेगेटिव थी। कल इसने सारे एवरेज के ऊपर एक क्लोज दिया था। प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं, देखते कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि अभी बहुत सारे नंबर्स आने हैं। बट एट 1732 कैसा मूव आ रहा है इसमें, जरा एक बार इंट्राडे स्विंग्स को देखते हैं। डॉक्टर साहब ये देखिए स्विंग्स तो अच्छे हैं और एबिटा 3608 करोड़ से बढ़कर करीब 4302 करोड़ रुपए, ये आई थिंक एक स्पेस प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ। आशीष नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको, मतलब आशीष चतुर्मोता जी, फार्मा में बहुत ही नेगेटिव प्लेसमेंट थी, हार्डली अभी तो निडिमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, आपका सन फार्मा पे टेक इस वक्त? नहीं देखिए, बिल्कुल सन फार्मा के अंदर में आप देखेंगे स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और हमने देखा है कि आज जो पूरे टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन में भी ये बात हुई कि भी फार्मा सेक्टर को कहीं ना कहीं रखा है पूरे टैरिफ की सिचुएशन में, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं शॉर्टर टर्म में एटलीस्ट फार्मा कंपनीज को देखने को नजर आएगा। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे हैं क्योंकि मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और जिसका रिफ्लेक्शन प्राइस में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अपसाइड 1850-1900 रुपये तक की मुझे लगता है कि सन फार्मा के स्टॉक में देखने को बन सकता है। ओके, सन फार्मा रिजल्ट के बाद वर्टिकल राइज आपको देखने को मिलेगा। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी सन फार्मा में देखने को मिल रही है फिलहाल। तो एक टेक्निकल चेक भी लेते हैं इस पर, कैसे प्लेस्ड है ये। प्रशांत जी आप बताइए, सन फार्मा जिस तरीके से इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, क्या लग रहा है, ये लिक्विडेटिव लग रहा है ये स्टॉक अभी लेने लायक है या फिर थोड़ा वेट करें? जी श्रेया, मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट करने की वजह ये कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब सेम प्राइस एक्शन हो रहा है और जो पिछले बार भी इसी लेवल पे रिएक्ट हुआ था, तो मैं वेट करूंगा ये एक बार करीबन 1740-45 के जोन के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ये क्लोजिंग मिल जाए तो डेफिनेटली मैं एक पोजिशनल अप्रोच रखूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1725, 1725 और यहाँ पे मेरा टारगेट फिर होगा करीबन 1775-80, बट ये क्लोजिंग जरूरी होगी। ओके चलिए अभी काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। एक बार जरा आप डेरिवेटिव के टॉप गेनर्स को देखिए और आपको देख के अगर आप देखें तो मतलब स्विंग्स में केन्स टेक्नोलॉजी इस वक्त सबसे ऊपर नजर आएगा। थोड़ा सा बात करते हैं, आशीष मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। आशीष थोड़ा सा समझाइएगा कि नंबर्स कैसे रहे आज का सबसे स्ट्रॉन्ग गेनर, क्या गजब का प्लेसमेंट इस स्टॉक का, नंबर समझाइए और कौन कौन में एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने क्या कहा, क्या इंप्रेसिव लगा आपको आज? देखिए नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे और मार्केट को भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि कारण ये कि जो ग्रॉस मार्जिन्स है ये पिछले साल 27% के थे जो बढ़कर 41%, 41% के देखने को मिले। रेवेन्यू 34% बढ़ी है, एबिटा में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है, 17% के मार्जिन्स है जो कि सीक्वेंशियली भी 17% के देखने को मिले थे। लेकिन मार्केट को कॉन्कॉल में जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेलवे सेगमेंट को काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है। अब 7400 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक हो गई है और इस कंपनी में खास बात है कि ज़्यादातर रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो इंडिया से ही आता है। साथ में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट बता रहा है कि Q2 के बाद से जो एबिटा की ग्रोथ है और बेहतर यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक ही दिक्कत है कि स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर चल रहा है। लेकिन खास बात ये भी है कि पिछले 3 साल में मुनाफे में ध्यान दीजिएगा 92% CAGR की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 134 टाइम्स TTM-P पर चल रहा है। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं लेकिन बाजार को जो आगे की ग्रोथ आउटलुक है बहुत पसंद आ रही है। ओके, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। काफ़ी शानदार नतीजे और वो स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक वायदा के बाद बाजार में टॉप गेनर्स में शामिल, इनफैक्ट 10% की इंट्राडे में हमने इसमें तेजी देखी। शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO जयराम भी से बात करते हैं। जयराम जी बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो यही सवाल होगा, शानदार नंबर केन्स टेक के देखने को मिले, वजह क्या रही जिस तरीके से प्रॉफिट और रेवेन्यू में आंकड़े आए हैं सामने? जी जयराम जी म्यूट है, मैं चाहती हूँ कि आप अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी 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 शुक्रिया। सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद शो में मुझे मेरी बात सुनने के लिए।
और सो बेसिकली हमारा जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है, इट इज़ ड्रिवन बाय ऑर्डर्स। सो ये ऑर्डर्स तकरीबन 6 महीने से लेके 5 साल तक के ऑर्डर्स बुक होते हैं कस्टमर्स के साथ। हमारा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है, 6 डिफरेंट वर्टिकल्स हम उसको कहते हैं, सेक्टर्स कर लीजिए आप, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल सकता, बट क्या होता है कि एक ब्लेंडेड बिजनेस है। सो कोई कुछ सेक्टर अच्छा काम कर गया, कुछ सेक्टर थोड़ा ढीला पड़ गया, तो उसके हिसाब से हमारा जो है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चेंज लिटिल बिट बट नॉट टू मच। सो दिस पर्टिकुलर टाइम आई थिंक आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट टू आवर कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स ओवर लास्ट 2 years। पिछले 2 साल तक हमने जो हमारे ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के लिए जो काम किया है, मटेरियल कॉस्ट हुआ, डिज़ाइन लेके कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए, वो सब उसकी वजह से हमको एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कारोबार थोड़ा ज़्यादा रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कहते हैं प्लस पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग दी मार्जिन्स। और आगे जाके देखिए तो क्या होगा कि पहले क्वार्टर से लेके चौथे क्वार्टर तक बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो इसलिए हमको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं वो भी शायद मिलेगा। इसीलिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है वो ऊपर जाता रहेगा। और हमारा ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग बढ़ रहा है एंड हम लोग जयराम जी, मैं आई थिंक ऑर्डर बुक के से तो मैं आपकी सहमत हूँ सर। आज क्योंकि ये विषय है टैरिफ वॉर का, भारत पे लगे यूएस के टैरिफ, आई नो, आई मीन 91% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कम्स फ्रॉम इंडिया, है ना, आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि एक हाई टैरिफ एनवायरनमेंट आपके लिए वो सेगमेंट जो कि 10% रेवेन्यू लेके आता है, कितना चैलेंजिंग होगा? यूएस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? अगर आपको अपने एक्सपोर्ट्स पे कैपिटलाइज करना था आने वाले वर्षों में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आप कैसे देखते हैं? जस्ट 1 मिनट लूँगा मैं समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट्स और ज्योग्राफी से, जैसे कि हम यूएस में फैक्ट्री लगा के यूएस में धंधा करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दिया बाहर से आने के लिए, तो वहाँ पर जो भी बिजनेस वहाँ फैक्ट्री लगाएगा, तो वो हमने पिछले 2 साल से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएस में एक्विजिशन किया है और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो एड्रेस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट को हम सप्लाई करते हैं यूएस में, थोड़ा बहुत हम लोग वहीं पर फैक्ट्री बना के करेंगे, तो उसका टैरिफ के ऊपर नीचे जाने से उसका कोई इम्पैक्ट रहता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्रिटिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में करते हैं, तो जैसे कोई ओईएम यूएस में रहा है, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया है, तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? वो चाइना के पास वापस तो जा नहीं सकते, और साउथ एशिया में भी, वियतनाम में यदि उनका कुछ पॉसिबिलिटी है बढ़ाना तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब साउथ एशिया में भी सिमिलर टैरिफ है। तो इसीलिए, और इंडिया ओईएम को क्या है कि इंडिया इज सीन एज अ सेफ मार्केट। जैसे हम लोग जैसे इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, उनका वो जो डिज़ाइन वगैरह, हम लोग उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती इंडिया में, जनरली काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड हमारा। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये जो टैरिफ का, जो छोटा मोटा टैरिफ का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं लाएगा। एंड ओवर टाइम हम लोग वहाँ पे कुछ और एक्विजिशंस करेंगे ज़रूर, तो उससे हमारा जो है जोग्राफी, यूएस जोग्राफी मार्केट सर्विस विल इम्प्रूव, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग हम यूएस में करेंगे वो इस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा और उसमें टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर है, और जनरली सभी कंट्रीज, सभी देशों में सेमीकंडक्टर उस तरह के रॉ मटेरियल पे ज़्यादा कुछ टैरिफ करते नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में आप सेमीकंडक्टर ले लिए 72 कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन रहता है, अलग अलग, कोई केमिकल देता है, कोई कॉपर देता है, कोई कुछ देता है, तो इसीलिए उसको वो लोग बहुत ईजीली, वो हाई वैल्यू एड आइटम्स पे ज़्यादा करते हैं, जेम्स ज्वेलरी, इस तरह से वो लोग जो है हाई वैल्यू एड आइटम्स के ऊपर टैरिफ ज़्यादा बनाते हैं। तो हमारा आउटपुट है जो यूएस जाएगा वो सेमीकंडक्टर हुआ, और अगले साल पीसी बोर्ड हुआ, और इस साल करीब 10% का हमारा बिजनेस वहाँ जाता है। उनके ऑप्शंस कम है, एक ये हो सकता है कि वो लोग थोड़ा टाइटन करेंगे अपने। तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ का? ज़्यादा बड़ी तस्वीर यही है कि इम्पैक्ट का, टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जयराम जी, आपने हालांकि जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी एक्विजिशन को लेकर, क्या प्लानिंग है आपकी ओवरऑल इंडिया में, अब्रॉड, थोड़ा और डिटेल में अगर आप बता पाएँ। जी जरूर। सो एक्विजिशन इसीलिए करते हैं कि हमारे किसी पोर्टफोलियो में गैप होता है, कोई मार्केट हमारा एड्रेस ठीक से नहीं होता है, इसीलिए हम लोग एक्विजिशन करते हैं। सो जैसे यूएस मार्केट हुआ, वो एकदम इंसुलर मार्केट है। हमारा जो प्रोडक्ट है, लो वॉल्यूम हाई टेक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है, वो जनरली एडवांस कंट्रीज में ही होता है।
तो यूएस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग भी कर सकते हैं, बट वो टैरिफ के चक्कर में इधर उधर आता नहीं है, और ऑल्सो आईपी के रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते नहीं उसको। तो हमारा एक मानना है कि यूएस ज्योग्राफी में हम लोग यदि फैक्ट्री लगा के उसको ग्रो करेंगे तो हमको काफ़ी से फाइनेंशियल ईयर 30 तक ऑलमोस्ट 25% ऑफ बिजनेस वी कैन डू इनसाइड यूएस, इट नॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर, बट वहीं पे हम लोग खरीदी करके वहीं पे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये लोग यूएस मिलिट्री का बिजनेस हुआ, एक टेलीकॉम का बिजनेस, सम ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बिजनेस, वो सब वहीं पे बनता है एक्चुअली, तो उसमें हम लोग पार्टेक करेंगे। सो हमारे 3 तरह के एक्विजिशन होंगे। एक तो यूएस ज्योग्राफी में कंपनियां जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रही हैं, जिनके पास अच्छे क्लाइंट है जो हमारे पास नहीं है, उसको हम अक्वायर करेंगे। ऑलरेडी 2 कर चुके हैं हम लोग, छोटे छोटे, एक छोटा $5 मिलियन की कंपनी थी, एक $45 मिलियन की, अगला थोड़ा बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ाइन एरिया में हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि हम खुद वैल्यू एडिशन जो होता है एक प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और कंपोनेंट, ये 3 चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छे से करते हैं, साथ में डिज़ाइन भी ऐड करेंगे कुछ सेक्टर्स में जैसे रेलवे हो, और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो कंपोनेंट पीसी बोर्ड उसमें 1-2 प्राइमरी बिजनेस में सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्कोप बढ़े जी। और किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय का अभाव था वरना एक प्रश्न और था आपसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर, और आज आपका स्टॉक टॉप पेंडिंग है इस वक्त इन डेरिवेटिव्स किंग्स टेक्नोलॉजीज 10% अप हुआ है। मीनवाइल निफ्टी करीब 242,875 पर अभी तक 10 डेमा नहीं कटा है, दैट्स एग्जैक्टली 24,955। अभी काम करते हैं टॉप कैश पिक करेंगे। आशीष जी क्या कन्विक्शन है तो वीरेंद्र, न्यू एज बिजनेसेस में हमें डिलीवरी काफ़ी पसंद है, इसकी चर्चा पहले भी हमने शो पे की थी। हमें लगता है कि जिस तरह से इस पूरे स्पेस में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये पूरा जो लॉजिस्टिक और 3P का पीएल का जो बिजनेस है उसके अंदर में काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में देखने को मिला। और ईकॉम एक्सप्रेस करके कंपनी है जिसको डिलीवरी ने एक्वायर किया, जिसके बाद अब बाय रेवेन्यू टर्म्स ये सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बन चुकी है। और इस एक्विजिशन के बाद एक चीज़ और अच्छी हुई है कि जो मार्जिन से इसमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को नज़र आ रहा है, और जिसके चलते आपने देखा कि जहाँ पे 2 साल पहले कंपनी एक नेगेटिव मार्जिन प्रोफाइल के अंदर में काम कर रही थी, अब वही हम पॉजिटिवली टर्न हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 4% का ये साल में पूरा मार्जिन हुआ है। और अगर से इस पूरे क्वार्टर में देखिए, लास्ट क्वार्टर में तो मार्जिन करीब 5% के आसपास आई है, तो एक अच्छा खासा मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। ओवरऑल मेरा मानना है कि इस ई-कॉम एक्सप्रेस के एक्विजिशन के बाद 28% एबिटा ग्रोथ हमें पूरी देखने को नजर आएगी, और जिसके चलते मुझे लगता है कि अच्छी खासी री रेटिंग डिलीवरी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अगेन ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स इंपॉर्टेंट एवरेजेस, और जिसके चलते हमें लगता है कि आज का जो एक रिकवरी आई है 5-6 दिन की गिरावट के बाद, ये क्लियरली कहीं ना कहीं बाजार की इस स्टॉक की शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है, और वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है 400 रुपये के आसपास बन चुकी है। तो 400 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगता है डिलीवरी में दिखता है, और ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 520 रुपये तक के स्तर डिलीवरी के स्टॉक में देखने को मीडियम टर्म में नजर आ सकता है। 500 तक के स्तर डिलीवरी में देखने को मिल सकते हैं। ये टॉप कैश कॉल आशीष जी की तरफ से। गाबा सर आप बताइए, आप क्या चुन रहे हैं कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पता है गेब्रियल इंडिया, तो गेब्रियल इंडिया अच्छा लगता है 1026 के आसपास ट्रेड है। साइडवेज जोन लगेगा आपको, लेकिन इस साइडवेज जोन में भी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन स्टॉप होना चाहिए करीब 1017 के आसपास, ज़्यादा नहीं। नियर टर्म पे टारगेट 1080 के पॉसिबल ट्रेड बन सकता है गेब्रियल इंडिया। गेब्रियल इंडिया आपकी स्क्रीन पे 1027 पे, और आपका बाइक कॉल प्रशांत जी के पास आता है। प्रशांत जी आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी, मुझे यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है GNFC। ये अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में है, और कंसोलिडेशन के निचले लेवल पे करीबन 542 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 530 के नीचे, बिलो 530, और मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 565, 570, 565, 570। ओके JNFC, ये बाय की कॉल आ गई प्रशांत जी की तरफ से। टॉप कैश कॉल में स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके स्क्रीन पर होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस बीच वेदांता के भी रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर आप देखें तो
मुनाफा अनुमान से थोड़ा घटकर आ रहा है साल दर साल, और इसका असर आप देखो यहाँ तक स्टॉक थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3,606 करोड़ रहा, जब से घटकर इम्पैक्ट 3,000 एक बार रखिएगा वो आंकड़ा फिर से। और देखिए आई यानी कि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है, और 3,158 करोड़ हो गया इनका कंसोलिडेट मुनाफा। तो फिलहाल ये नंबर्स अब देखते हैं कि और कैसे आते हैं, और स्टॉक की रिएक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस के भी रिजल्ट आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और टिकट टीम चलाती रहेगी सारी ब्रेकिंग। यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे। एक बार बड़ी तस्वीर में देखिए कंसोलिडेट मुनाफा यहाँ पर घटा है 1454 करोड़ से आधा हो गया, इनफैक्ट 734 करोड़। वीरेंद्र जी, अडानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में तो आधा करीब करीब गिरावट देखने को मिल रही है, साल दर साल ये आंकड़ा आ रहा है फिलहाल। अभी ये नंबर्स आएंगे शेयर और थोड़ा सा उसको बारीकी से देखें। आए की बात देखें तो टॉप लाइन में रिडक्शन है लगभग 22 से 23%, ये 12 से 18% का लगभग स्क्रीन पे 25,472 करोड़ से घटकर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में रही है ये, और मुनाफा 1454 से घटकर लगभग 734 करोड़ रुपये। ये प्लीज़ कॉमा हटाइएगा यहाँ से, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको एरर को ठीक कीजिए, फिर इसको बात करेंगे। वो प्रॉफिट की फिगर्स को अगर आप देखें थोड़ा सा गलत हो रहा है। खैर एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ठीक ठाक है, मतलब जो इंट्राडे गेन दे दी वो काफ़ी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक होने का वक्त है। एक बार लेके आइए एपीएल अपोलो ट्यूब्स, आज ये सीएनबीसी आवाज़ पे पहला ट्रेड किया था, रिवर्सल ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, जिस समय गिफ्ट निफ्टी 200 अंक नीचे था, उसके बाद निफ्टी करीब 200 अंक नीचे पड़ा था। ये पिक किया था आज रचना जी, बेहद खूबसूरत था। बट लेके आइए उसके बाद एटर्नल अब 310 पे, माना सर ये भी आज सुबह सुबह रचना जी का ट्रेड था। आज रचना जी ने बहुत अच्छे खेल खेले, बट नाउ धीरे धीरे ये पैटर्न जो है वो एक टिपिकल कप एंड हैंडल में कन्वर्ट है। मेरा सिंपली प्रश्न आपसे ये है, क्या एटर्नल अगर बाजार थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो किसी नए क्लस्टर में जाने की तैयारी कर रहा है क्या मनोज जी? सीरियसली इस चार्ट को देख के मेरे को एक फीलिंग आ रही है। तो देखिए ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। ये मेरे लिए क्वेश्चन था जी। तो देखिए ये जो कंसोलिडेशन है ये ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है टनल में, और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। और अगर ये 612 613 312 313 के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो उसके बाद के नेक्स्ट जोन जो होगा वो करीब 340 से लेकर 350 का हो सकता है। इससे बिल्कुल नजर रखिए। और आई थिंक एक बढ़िया पिक हो सकता है अगर आपको लॉन्ग साइड पे प्ले करना है तो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज नीचे स्टॉप लॉस लगा के 299 के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है टर्नल में। ओके, टर्नल शानदार रैली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, रिजल्ट के बाद से इसमें एक तरफा एक खरीदारी होती हुई नजर आई है। बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन शानदार रैली, और चार्ट्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग 310 तक के लेवल पर अभी 299 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं टर्नल पर। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुचित जी। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए अभी फिलहाल आपका ट्रेड कौन सा? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल फ्रेश बाइंग के लिए मैं एचयूएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह दूंगा। आज नंबर्स के बाद में जो हमने वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग इंटरेस्ट देखा है, सो आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को सेट करता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रह चुका है ब्रॉडर मार्केट्स की पूरी ये 3 महीने की तेजी में। सो आई थिंक यहाँ पे आज प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए ब्रेकआउट देखते हुए लग रहा है कि फॉलो बाइंग भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो करंट लेवल्स पे 2480 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और 2650 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एचयूएल नतीजों के बाद शानदार रैली, और रुचि जी के पिक इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं रिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो में और ऑटो सेल्स नंबर की बात करते हैं। और यहाँ पर नजरें बनी हुई है बाजार की, ऑटो बिक्री आंकड़े आएंगे, कैसे हो सकते हैं आंकड़े, इस पर नोमुरा ने एक रिपोर्ट निकाली है और ज़्यादा डिटेल की चलती है यतिन जी के पास। यतिन जी बताइए क्या कह रहे हैं नोमुरा? राइट, तो जो नमूरा का एस्टिमेट हम लोग एवरी टाइम बताते हैं, उसमें जो जुलाई मंथ के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े फीके रहेंगे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। हालांकि टू व्हीलर्स, यूवी सेल्स और अगर हम ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो जिस हिसाब से मानसून की प्रोग्रेस हुई है, डिमांड बढ़ी है और डबल डिजिट यहाँ सेल्स ग्रोथ आता हुआ नज़र पड़ेगा। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मिक्स रहेंगे, तो टू व्हीलर सेल्स में भी कोई आप बड़ी एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं देखेंगे। बात करते हैं अनुमान की, तो सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स की बात करते हैं, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, और दोनों के ही नंबर्स आपको 3-4% ग्रोथ की रेंज में दिखाई देंगे। इनफैक्ट अशोक लेलैंड की बात करें तो 14,400 यूनिट्स बिक्री का अनुमान है, 3% की ग्रोथ रहेगी।
टाटा मोटर्स का नंबर जो है फ्लैट रहेगा, क्योंकि इनके जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बेस भी बढ़ा है और 68,200 के आसपास ये नंबर फ्लैट आपको दिखाई देगा साल दर साल बेसिस पे। बात करते हैं 4 व्हीलर प्लेयर्स की। मारुति का नंबर भी आपको 4% ऊपर जाता हुआ नज़र पड़ेगा, 1,80,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में 17% की ग्रोथ, और यहाँ ऑब्वियसली नए मॉडल्स और जो नई BEVs लॉन्च की हैं उसके चलते स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा M&M ट्रैक्टर की बात करें तो 16% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो की बात करें तो नंबर फ्लैट रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट फीके हैं, 3,60,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान है। हालांकि रॉयल एनफील्ड में 34% की ग्रोथ, पिछले साल का बेस छोटा था और क्लियरली इस टाइम 90,000 यूनिट्स यहाँ आपको बिक्री होते हुए नजर पड़ सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स दोनों ही 4 से 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास अनुमान है नंबर्स आने के। हीरो मोटोकॉर्प के लिए 21% की ग्रोथ, क्योंकि रूरल मार्केट अच्छे हैं, और TVS मोटर्स में भी स्कूटर की बिक्री अच्छी है, तो यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। ओके, इतना शुक्रिया आपका। एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा, जस्ट हैविंग प्रायर टू नंबर्स, क्या प्लेसमेंट है निफ्टी ऑटो। देखिए बहुत प्रोग्रेसिव है अभी। जो दो चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं, मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, मैं कोई आउटलुक हमको मिल गया अच्छा निफ्टी फार्मा, एक मिल गया निफ्टी हेल्थ केयर, अच्छा हो गया आज HUL के नंबर्स के बाद आपका ये FMCG। लेट्स सी कल नंबर्स कैसे आते हैं, मंथली सेल्स फिगर एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करे। आई मीन कमर्शियल पैसेंजर टू व्हीलर 23,800 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकला निफ्टी ऑटो, तो ये शायद हमारे लिए नया ब्रेक थ्रू हो सकता है अगली सीरीज। क्या काम करते हैं धमाकेदार ऑप्शंस, ये 3 ट्रेड सचिन भी माना सवालित यहाँ पे आपके स्क्रीन पर रखेंगे, उनको आइए जरा समझते हैं आज क्या क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं। सचिन क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स में मुझे लग रहा है रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस तरीके से प्राइस पैटर्न डिस्प्ले कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पर फ्लैट ब्रेकआउट हुआ है, तो ये 7500 का जो एक रेजिस्टेंस था मुझे लग रहा है वो अभी ब्रीच हो चुका है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है। मुझे लग रहा है 7900 तक ये तेज़ी एक्सटेंड होनी चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर 7500 का जो कॉल ऑप्शन है ऑफ द सीरीज का लगभग अराउंड 220 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 188 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 290 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 365 का। खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के 7500 के कॉल ऑप्शन में। अपोलो हॉस्पिटल के 7500 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है, धमाकेदार ऑप्शन के लिए पिक किया है सचिन जी ने। आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए अदानी टोटल गैस एक पुट ऑप्शन खरीदारी तो 600 वाला पुट ऑप्शन अगस्त मंथ का जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 32 रुपए की टारगेट और गैस ये रवाना से पिक किया है, यहाँ पे भी खरीदारी की ट्राई। अमित जी आप बताइए आपके पिक क्या होगा धमाकेदार ऑप्शन के लिए? जी श्रेया जी, मैं इंडिगो के 5900 के अगस्त ऑप्शन के साथ जाऊंगा। करंटली 156 पे ट्रेड कर रहा है। इंडिगो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बार बना है विद वॉल्यूम, और स्टॉक ने एक ही कैंडल में 50, 20 और 10 डेमा रिगेन कर लिया है। तो 5900 का अगस्त का कॉल ऑप्शन बाय करें, 156 का प्राइस है, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और दो टारगेट्स यहाँ रहेंगे 200 एंड 250 के। ओके, ये हो गए 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे। मैंने एक बार लिखाइएगा आप चोला को, और यहाँ पर जो मुझे चीज़ इनके नंबर्स में खल रही है, एक तो थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय के फ्रंट पे स्लाइटली मिस है, और बॉटम लाइन भी आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। 1187 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, 1136 करोड़ रुपए रही, लेकिन यहाँ पे करीब 50 करोड़ का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में एक डिप है करीब 3184 करोड़ रुपए। और पर एक चीज़ जानते हैं क्या है यहाँ पर, मुझे लग रहा है इसमें सबसे ख़राब चीज़ वो है NPAs। इनके जो ग्रॉस NPAs हैं उसमें एक सब्सटेंशियल जंप है मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट का। वही एक कारण है कि स्टॉक सिंक हो रहा है इस वक्त 1448 डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके, अगर आप देखें ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है। और इसकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव थी, बहुत ही नेगेटिव थी। ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है। नेट NPS 2.63 से बढ़कर लगभग 2.86 की ट्रेजेक्ट्री में रहे, तो नेट में भी शार्प जंप है। और यहाँ देखिए करीब करीब 29 लगभग 32 बेसिस पॉइंट का इजाफा। आई थिंक थोड़ा सा ये नंबर नो डाउट अबाउट दैट खराब है।
और थोड़ा सा सेंस स्ट्रीट को था, क्योंकि ये मात्र अगर आप देखिए कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स में से है इस स्पेस में जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। श्रेया। बिल्कुल, चलो इन्वेस्ट के नंबर थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त नंबर, और स्टॉक भी देखिए गिर कर ही कर रहा है कारोबार, करीब 2% से ज़्यादा 14,146 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। देखिए कल रिजल्ट सीजन है और कल के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल आईटीसी के नतीजे आएंगे और वायदा में भी आप देखें टाटा पावर, एलआईसी हाउसिंग समेत 7 कंपनी के नतीजे आने हैं। और इसका अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। कंचन, पहले आप बताइए आईटीसी के नतीजों से क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे नंबर्स आ सकते हैं? जी, अगर आईटीसी के क्वार्टर 1 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स देखिए हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइनेंशियल रख देती हूँ जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नंबर वाइज किस तरीके का रिएक्शन हमें कल मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए 17,637 के आसपास जो हमें रेवेन्यू है वो देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वहाँ पे भी 2% उछाल की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो एबिटा फ्रंट पे तो नंबर्स में हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो ड्यू टू 1-2 सेगमेंट्स है उसके वजह से हमें थोड़े से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस टाइम पे आपको जो नंबर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट क्या करना है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे 3 से 4% का आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है। वही अगर सिगरेट के रेवेन्यू फ्रंट में बात करी जाए तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6% की ग्रोथ, और एबिटा फ्रंट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिगरेट सेगमेंट से करीब 3 से 4% की ग्रोथ। वहीं अगर एफएमसीजी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 से 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूरल कंजप्शन को देखते हुए जो एफएमसीजी के मार्जिन्स है वो हमें करीब 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। वही एग्री रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए जो इजाफा है वो जबरदस्त देखने को मिला है। मार्जिन अच्छे खासे एक्सपैंड हो सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट में 20 से 25% की ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम पे लगाई जा रही है। साथ ही साथ अगर इनका पेपर बिजनेस देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बिजनेस है वो हमें सबड्यूट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स फ्रंट पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। ओके, नंबर्स पॉजिटिव साइड में आ सकते हैं। अभी तक एचयूएल के नंबर अच्छे आए हैं, तो एफएमसीजी के नतीजों की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। एचयूएल के नंबर अच्छे आए हैं, नेस्ले और कोलगेट के हमने देखिए काफ़ी ख़राब। अब आईटीसी के नंबर कैसे रह सकते हैं उस पर स्ट्रीट का ये अनुमान ओवरऑल ठीक ठाक रह सकते हैं। एलआईसी के हाउसिंग के नतीजे कैसे रह सकते हैं कंचन? यहाँ पे स्ट्रीट पॉजिटिव है या नेगेटिव फिलहाल? जी, स्ट्रीट यहाँ पे भी पॉजिटिव ही इस टाइम पे एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अगर हम साल दर साल नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें करीब 2170 करोड़ के आसपास जो है वो उभरती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे करीब 5% तक बढ़ती हुई नजर आई है। 1375 करोड़ पे जो आंकड़ा है आपको नजर आ सकता है। लोन ग्रोथ की बात करी जाए तो देखिए साल दर साल यहाँ पे 8% अपसाइड का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिक्स है वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकता है। एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट की बात करी जाए तो ये भी हमें 20 बेसिस पॉइंट्स तक इस क्वार्टर में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यील्ड्स और साथ ही साथ जो मार्जिन्स हैं इसमें अगर हम देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो अभी हमने रेट कट देखा था उसके चलते एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब आपको लुकआउट किसके लिए करना है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मॉर्गेज डिमांड के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कॉमेंट्री आती है ये की फैक्टर होगा वॉच आउट करने के लिए। साथ ही साथ मार्जिन के ऊपर किस तरीके की गाइडेंस आती है। लोन ग्रोथ यहाँ पे आपको की मॉनिटरेबल होगा, और हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आई थी निम को लेके वो आई थी करीबन 3 से लेके 3.5% की। तो उस इस टाइम पे निम्स कहाँ पे आके रजिस्टर होते हैं, लोन बुक कहाँ पे आके रजिस्टर होती है, और साथ में एसेट क्वालिटी के लिए बोला गया था 2.2% के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो वो कहाँ पे रजिस्टर होती है। लेकिन ब्रॉडली नंबर्स स्टेबल है। ब्रॉडली नंबर स्टेबल आ सकते हैं। फिलहाल मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस पे नजर रहेंगे। शुक्रिया कंचन आईटीसी के नतीजे पे बातचीत करने के लिए। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए टाटा पावर के नतीजों से कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा है स्ट्रीट फिलहाल? देखिए थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको एबिटा में देखने को मिल सकती है। अब कारण अच्छे भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग है क्वार्टर के दौरान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। जो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है यहाँ पे एक रैंप अप हुआ है। 752 मेगावाट सोलार कैपेसिटी कमीशन हुआ है क्वार्टर 1 के दौरान, और जो मुंद्रा प्लांट है यहाँ पर प्लांट लोड फैक्टर PLF ये थोड़ा सा हेल्दी देखने को मिला है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन रेवेन्यू देखें तो 3% की बढ़त देखने को मिली है।
एबिटा जैसे कि मैंने बताया कि 5% की गिरावट देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन्स इनफैक्ट थोड़े से घटे हैं, 20.7% से घटकर 19% के एबिटा मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा है थोड़े से एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ खास नहीं है नतीजों में, अगर आप देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ओके चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आईटीसी के नंबर्स के, ये दोनों नंबर्स के एक्सपेक्टेशन रखने के लिए स्क्रीन पे। अच्छा आईटीसी की चर्चा भी इस कार्यक्रम में हुई थी, एक बार आईटीसी ले आते हैं जरा प्लीज़। आईटीसी रखिएगा, प्री नंबर्स कहाँ की प्लेसमेंट है, 413 आपके स्क्रीन पे आएगा। ये अभी भी मैं जो बात शायद कहना चाह रहा था, कल इस पर एक ट्रेड कविता जी ने दिया था कि 210 पार बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। ये स्टॉक अभी भी प्री नंबर्स अपने 20 डे मार्क के नीचे, और 410 से लेके 420 430 सारी स्ट्राइक्स इस स्टॉक में ना जो गजब बिकी हुई हैं, अगस्त के महीने में भी गजब बिकी हुई है। खैर चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से इस विषय को चेंज करते हैं। 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके सारे के सारे ट्रेड्स ले लेते हैं और शुरुआत करेंगे 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन से मानस सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे। उसके बाद आएगा आज का 4 का चमत्कार, वो सचिन बताएंगे। उसके एफएनएस सुपरस्टार माफ कीजिएगा रुचित देंगे आज के 4 का चमत्कार, और मिड कैप फंडा कुछ देर में हम बात करेंगे उस पर। मानस आपका आज का ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? मेटल क्षेत्र से वेदांता के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप वेदांता के पैटर्न्स देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली आज स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो 420 वाला अगस्त मंथ का पुट ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और इसमें आपको 17 रुपए के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके वेदांता, ये मानस जी के पिक सस्ता ऑप्शन के लिए रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट की चर्चा हम कर रहे हैं। समय नहीं था उस वक्त और डिटेल में बताएंगे आपको कैसे रहे नतीजे वेदांता के। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलते हैं। बताइए सचिन जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपने क्या पिक किया है? आशा, यहाँ पर दालमिया भारत में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, कहीं जाकर एक काफी अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। एक बेस यहाँ पर एलिवेट हो चुका है इस पर्टिकुलर न्यू सीरीज के लिए, जो लगभग अराउंड 2200 के आसपास एग्जिबिट हुआ है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो 2246 तक मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मोमेंटम के लिहाज से 2220 का स्टॉप लॉस आइडियल होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में एक अच्छा अपमूव यहाँ पर नजर आए। 2340 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर दालमिया भारत के अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 2220 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दालमिया भारत आपका 2254 पे बाय कॉल है। ये सीमेंट स्पेस सचिन जी का बहुत ही फेवरेट स्पेस है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने कई बार अगर आप देखें बहुत अच्छे ट्रेड्स निकाले वहाँ पे सचिन जी। खैर अभी चलते हैं विकास के पास, आज के रुचित के पास माफ कीजिएगा, आज के 4 के चमत्कार के लिए। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं? जी आज का 4 का चमत्कार मैं पिक करूंगा थर्मेक्स, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। अगर आप पिछले सिर्फ आज के सेशन का ही नहीं, अगर आप पिछले एक हफ्ते का अगर इसका चार्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रिसेंटली ये स्टॉक में आया है, और वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। जो पुलबैक मूव आया उसमें 20 डेमा 20 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए सपोर्ट है किया, और वो सपोर्ट से फिर से अप मूव का रिजम्पशन स्टॉक ने किया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि क्योंकि स्टॉक इतना चला नहीं है पिछले कुछ महीनों में और अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है थर्मेक्स में करंट लेवल्स पे। तो करंट लेवल्स पे 3830 3830 के नीचे स्टॉप लॉस रख के थर्मेक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4100 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4100 तक के टारगेट थर्मैक्स में नजर आ रहे हैं। फिलहाल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थर्मैक्स में भी देखने को मिल रहा है। एनर्जी स्पेस में ही अगर आप देखें तो थर्मैक्स, आईजीएल, सूजलॉन जैसे स्टॉक्स में आज थोड़ी बाइंग नजर आ रही है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं आशीष जी के पास। बताइए आशीष जी, आपने क्या चुना है मिड कैप फंडा के लिए? जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट की जो थीम है वहाँ पर हम काफ़ी पॉजिटिव, और हमें लगता है कि वाटेक वाबाग हमें काफ़ी पसंद आता है। ये स्टॉक जो अभी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की बनी हुई है, जो एक क्लियरली 4 to 5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो, जो क्लियरली एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे बना रहा है। साथ ही साथ मार्जिन में अच्छे खासा एक्सपांशन, और अभी जो रिसेंटली एक सऊदी से ऑर्डर आया है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, जिसके चलते हमें लगता है कि जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में अर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और आप अगर से देखेंगे तो जिस तरह से इनका फोकस प्योरली इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट साइड पर
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्लियरली इसका एक रिफ्लेक्शन मार्जिन में इंप्रूवमेंट में रहेगा, जो कि 15% तक एबिटा मार्जिन हमें लगता हुआ जाते हुए नजर आएगी। तो वाटेक वाबा का हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। यहाँ पर पे हमें लगता है स्टॉक 1530 पे एक अच्छा टेक्निकल बेस भी बना रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1750 1800 तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है वाटेक वाबा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, ये 4 का चौका ट्रेड्स हो गए। मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर, और जो कि अभी तक मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा है। मारुति के नंबर्स आए हैं, मुनाफा करीब 3712 करोड़ रुपए का। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल नंबर्स में करीब 20% का डाइवर्जेंस है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इसमें, वो देखना पड़ेगा, बट ये बहुत ही बड़ा अगर आप देखिए डाइवर्जेंस है। और जहाँ तक बॉटम लाइन का सवाल है, टॉप लाइन का सवाल माफ कीजिएगा, इट्स 38,414 38,414 करोड़ रुपए का, जो कि एक्सपेक्टेशन करीब 36,200 के आसपास थी। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फ्रंट पे मैं सिर्फ 2 नंबर्स का आधार बता सकता हूँ कि स्टॉक क्रैक हो सकता है। ये बाकी भी मार्जिन्स की पिक्चर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे, और बाकी वॉल्यूम सब कुछ देखेंगे। बाकी मेरी कमेंट्री एक्सपोर्ट मार्केट को लेके, डोमेस्टिक मार्केट को लेके, एंड स्पेशली जो आपका एसयूवी सेगमेंट है उसके नंबर्स कैसे रहे उसको देखेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी आशीष चतुर्वेदी जी बहुत संक्षेप में, मेरे ख्याल से वो है नहीं इस वक्त, बट ये देखिए मैंने पहला शब्द जो मेरे जहन में आया था इस नंबर को देखने के बाद कि ये क्रैक होगा। महाराज आपका व्यू इस पर बहुत एक छोटे से रेंज में है, बट इस वक्त निकलता हुआ इस रेंज से इंट्राडे में। देखिए यहाँ पर डायरेक्शनल कॉल लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ। अभी भी 12,800 12,900 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरा समझना है कि अगर यहाँ पर खरीदारी करनी भी है तो केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर 12,900 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। ओके, फिलहाल मारुति सुजुकी नंबर आपके स्क्रीन पर, और नंबर अभी तो फिलहाल अच्छे लग रहे हैं और शानदार रिकवरी भी निचले स्तरों से देखिए। मारुति इन ग्रीन आया करीब 0.13% की तेजी के साथ, आधा फीसदी की तेजी के साथ। चलिए अब डिटेल में समझेंगे इस नंबर को, कल ब्रोकरेज हाउसेस क्या मान के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस में हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज जी से। किया है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार मारुति को और देखते हैं। 12,700 पे आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ गदगद है। यहाँ पर ये इस वक्त टॉप लाइन बॉटम लाइन के नंबर्स पे एबिटा में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्लाइड ड्रॉप है, और मार्जिन्स अगर आप देखें, हालांकि याद रखिए जो मैं बात कहता था मेटल प्राइसेस फर्म रहे हैं, दैट विल पुट प्रेशर ऑन मार्जिन्स। एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो घटे हैं। अन्य आय ये देखिए, ये है, दैट्स द फैक्टर। मैं कहता ना कोई एक्सेप्शनल आइटम है कि नहीं। अन्य आय यहाँ पर 975 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो ये एक फैक्टर था जिसने शायद बॉटम लाइन को थोड़ा सा पुश किया है। खैर, फिरोज अजीज आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। फिरोज, आज हमने एक मतलब हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक हमारा रनिंग अर्निंग सीजन, और दूसरा US टैरिफ। फाइनली आपके पास एक फिगर है अब 25%, मतलब जिस हालात में ये लगी है, और एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने मात्र ट्वीट के जरिए अगर आप देखें इस टैरिफ का ऐलान कर दिया। आप इसे एक तरफा मानेंगे, बट दैट्स आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो एज ऑफ नाउ। 25% का टैरिफ, जिस प्रकार का मार्केट का रिएक्शन है, आप इस इवेंट पर इस रिएक्शन को कैसे रीड कर रहे हैं? आपका टेक इस टैरिफ के मतलब आने के बाद जो मार्केट का एक्शन रहा उसको देखने के बाद। वीरेंद्र सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये जो इसका टेक है, हर न्यूज का हमने एक एनालिसिस किया कि न्यूज भले ही कितनी बड़ी हो, उसका जो रिएक्शन होता है 2 चीजों पे आधारित होता है। एक, क्या वो नई खबर है या इंक्रीमेंटल खबर है।
ये एक इंक्रीमेंटल खबर मानी जाएगी, क्योंकि इसका ये जो नया वेरिएबल आया था वो 7 अप्रैल को आ चुका था। इसीलिए आपने देखा कि पहले क्षणों में ही 1600 पॉइंट निफ्टी गिर गई थी 23,200 से सीधे 21,700, क्योंकि नया वेरिएबल था। अब ये नया वेरिएबल नहीं है, इंक्रीमेंटल और न्यूज है। उस पे जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशन से परे आते हैं। काफी लोगों ने कल रात को जब मैं बात कर रहा था एक्सपर्ट से, मार्केट गैप डाउन खुलेगी, तो मैंने कहा भाई ये जो न्यूज है ये ऑलरेडी बासी न्यूज है, ये कोई फ्रेश न्यूज नहीं है, नया न्यू वेरिएबल नहीं है, ऐसे कि क्रोएड ब्रेकआउट आया। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड इज किस स्थिति में आती है। एक साल का प्रैक्टिकल टाइम करेक्शन हो चुका है, 5.86 प्राइस करेक्शन हो चुका है। सितंबर 2024 में आप 26,200 पे थे, 11-12 महीने का टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन 6% का, एफआईआई की नेट सेल 86% की, एफआईआई की कैश सेल 3 मंथ्स की सबसे हाईएस्ट, डीआईआई का कैश फ्लो पॉजिटिव, ये सब के आधारित मेरे हिसाब से निफ्टी ने एक सबड्यूड नॉर्मल डे, जो आप आज इंडिया की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है निफ्टी की वो 18.37 है लास्ट 1 ईयर की। इसका ये मतलब है कि हर दिन 1.1% की तो मूव एवरेज आती है। दैट्स व्हाट 18% वॉलेटिलिटी सेज। तो आज एक नॉर्मल डे इसलिए निकला क्योंकि ये दीज आर द 3-4 फैक्टर्स। हर खबर को हम खबर की तौर पे नहीं देखते, वो खबर आती कब है इस पे उसका पावर आधारित होता है। ओके तो फिलहाल ये कुछ फैक्टर्स। फिरोज जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आऊँगे आपके पास, लेकिन डाबर के नतीजे फ्लैश हो रहे, एक बार उस पर उसको देख लेते हैं नंबर। और देखिए कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप रखें स्क्रीन पर तो 500 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ हो गई है। मिनिमम बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे, देखिए साल दर साल के आंकड़े बता रही हूँ मैं आपके सामने। और अभी से थोड़ी देर पहले हमने एक्चुअल के रिजल्ट भी देखे आज सुबह, तो वो तो अच्छे थे, लेकिन डाबर के नतीजे आप देखें तो आई 3,349 से बढ़कर 3,405 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साल दर साल। लेकिन एबिटा मार्जिन बिना बदलाव के 19.6% पर ही है साल दर साल के हिसाब से, लेकिन मुनाफा थोड़ा बढ़ा है। इसी पर सवाल होगा फिरोज जी, जिस तरीके से एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें नतीजे आए, हमने एचयूएल के नतीजे आज देखे, शानदार नतीजे थे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। हमने कोलगेट के नतीजे देखे, काफ़ी ख़राब स्ट्रीट ने पनिश किया था। हमने नेस्ले के नतीजे देखे, ख़राब थे। एचयूएल ने कहीं ना कहीं कमान संभाला फिलहाल। और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे फिलहाल एफएमसीजी कैसा लग रहा है अभी फिलहाल मार्केट में प्लेस आती बड़ी तस्वीर आपको अभी रिजल्ट की कैसे नजर आ रही है? एफएमसीजी के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, निफ्टी एफएमसीजी जिसको मैं ट्रैक करता हूँ उसमें 15 स्टॉक्स हैं, उसमें से 5 के रिजल्ट आए हैं, 23% की 24% की वेट के रिजल्ट आए। ऑफ कोर्स दिस इज अपडेटेड एज ऑफ यस्टरडे। तो मेरे हिसाब से जो अब तक के जो 5 रिजल्ट्स टैबुलेट किए हैं उसमें -2.3% की वेटेड एवरेज नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 59 रुपीज की अर्निंग्स आई है निफ्टी एफएमसीजी पे। रहा सवाल, मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं, और इसके जो वेट्स हैं, हम हर सेक्टर को ये देखते हैं कि इसमें पैसिव वेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। जैसे निफ्टी में एफएमसीजी का वेट है 6.5% और एनएसई 500 में इसका वेट है 5.8। हर सेक्टर और हर स्टॉक की या तो फिर पैसिव फ्लोज की वजह से हेडविंड आ सकती है या टेलविंड आ सकती है। मेरे हिसाब से एफएमसीजी में पैसिव के आउटफ्लोज होंगे rather than इनफ्लोज होंगे ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। So not so bullish from a 1 year standpoint, Shreya. इस बीच देखिए मारुति के नंबर्स में 2 चीज़ें नज़र आई, और ये था एक तो एक्सेप्शनल आइटम, वो थोड़ा सा अगर आप देखें आपको मायूस करेगा, और दूसरा है मार्जिन्स थोड़े से डिप हुए। टॉप लाइन बॉटम लाइन की फिगर थी अच्छी, बट मार्जिन्स थोड़े से स्क्यूज हुए हैं। दैट्स लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम है। लेट्स सी ये थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, क्योंकि कोर नंबर्स ठीक थे टॉप और बॉटम लाइन के, बट थोड़ा सा अगर आप अंदर जाए ना नंबर्स में तो थोड़ी सी वीकनेस है। इस बीच थोड़ा सा लेके आइए आप, निफ्टी बैकफुट पे आया है करीब 24,767 पे, और प्रेशर में क्या डाल रहा है इंडेक्स को थोड़ा सा। और जरा प्लीज़ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। प्रेशर में जो बास्केट थोड़ा सा निफ्टी को लेके आई है वो जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए प्लीज़। रिलायंस अगर आप देखें ड्रैग करता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1388 ये डीलों की तरफ आता हुआ, एंड मोर स्पेशली एचडीएफसी बैंक। अच्छा फिरोज, एक तो बास्केट जो इस बाजार की सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स रही है उसमें फार्मा सबसे ऊपर रहा। हेल्थ केयर को देखिए आप,
जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, सारे हॉस्पिटल्स ऑल टाइम हाई पे। आप लोग की रीडिंग इस सेगमेंट में क्या है? मतलब डिफेंसिव्स का भी ये अंश सबसे एग्रेसिव रहा पिछले लगभग 3 महीने में, मोस्ट स्पेशली हॉस्पिटल्स, मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में कभी सिंक ही नहीं हुआ ये। यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र साहब, मेरा ये व्यू है कि ये जो सेक्टर है इसकी और 3 क्वार्टर तक प्रैक्टिकली दिस फाइनेंशियल ईयर इस पे हम बुलिश रहेंगे। लॉन्ग टर्म इतनी बुलिशनेस नहीं है, बट इसकी जो लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ आई थी निफ्टी फार्मा की, ऑलमोस्ट 26% की अर्निंग्स ग्रोथ आई थी। ऑलमोस्ट अबाउट अगर आप देखें तो अर्निंग्स के नंबर अगर मुझे याद हो तो 627 रुपीज की निफ्टी फार्मा की अर्निंग्स आई थी, तो उसमें ये सब आ जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पैसा बनाना मेरे हिसाब से संभावना कम है। बट आप सही फरमा रहे हैं कि इनके जो जैसे हॉस्पिटल के शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब पुश की वजह से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक अगले 6 महीने तक इनमें बुलिशनेस रहेगी। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो निफ्टी को बीट करना चाहता है निफ्टी फार्मा से 3-4% पर एनम, 3-4 साल के लिए नहीं होगा, बट आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टिल बुलिश। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। काफी सारी ओनरशिप चेंज हो रही है, हाथ बदल रहा है स्टॉक। आई थिंक फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टर्स मोमेंटम इन्वेस्टर्स के हाथ में जा रहा है, तो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए। ये हमारा अंदेशा। ओके, फार्मा स्पेस को लेकर और हेल्थ केयर स्पेस को लेकर आप बुलिश साउंड कर रहे हैं। फिरोज ये क्वेश्चन मैं लगातार पूछ रही हूँ, थोड़ा रेपिटेटिव साउंड हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन सवाल अहम भी है क्योंकि हमने रिजल्ट्स अभी तक देखे, हम चर्चा भी कर रहे थे। इटर्नल के नंबर आए थे और काफ़ी इंप्रेसिव नंबर, जिस तरीके से कोई कॉमर्स स्पेस को लेकर आंकड़े आए, उसके बाद से हमने एक तरफा रैली देखी इटर्नल में। एक तो इस क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आप क्या सोचते हैं, अभी आपका रुझान और बढ़ा है क्या जब से नंबर आए हैं? दूसरा, पूरा न्यू एज स्टॉक्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर आपकी राय क्या होगी? मेरे हिसाब से न्यू एज स्टॉक्स फंडामेंटल पे कम आधारित होते हैं, पैसिव पे ज्यादा आधारित होते हैं। फॉर एग्जांपल इटर्नल जो आप कह रही थी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन स्टॉक, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो अब वो निफ्टी के अंदर आता है तो 8 लाख करोड़ तो ईपीएफओ के लगे हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इससे क्या होता है कि जो 8,000 10,000 करोड़ की इन्फ्लक्स आती है, उसकी वजह से जो पहला किक स्टार्ट चाहिए होता है अपनी गाड़ी को, वो मिल जाता है पैसिव के लार्ज इन्फ्लोज से। फिर ट्रेडर लोग आते हैं कि यार ये तो पूरी ब्रेकआउट हो गई, तो उनके पैसे लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो लॉन्ग ओनली एक्टिव डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर्स हैं, वो बोलते हैं यार कोई ना कोई कहानी देके वो बोलते हैं यार इस बिजनेस अच्छा है। सो क्या होता है कि ये जो न्यू एज बिजनेसेस में लार्जली उनकी जो इंक्लूजन्स होती हैं, अगर बड़ी लेवल पे आप लिस्ट करते हो तो 6 महीने की लिस्टिंग के बाद या 1 साल की लिस्टिंग के बाद वो कई सारे इंडेक्स फंड्स में इंक्लूड होते हैं। तो उसकी वजह से जो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से नई न्यू एज बिजनेसेस हैव बीन वैल्यूड एट ऑब्सीन लेवल्स। अब निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं तो 18 स्टॉक ऐसे हैं, 17 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी 50 से ज्यादा की पी है। अगर आप वेटेड एवरेज निफ्टी की पी चलाते हैं और पूरों को एक साथ डालते हैं तो ऑलमोस्ट 36 की पी आती है, 22 की नहीं आती है, जैसा एनएससी पे दर्शाया जाता है। क्योंकि एनएससी अर्निंग्स कैलकुलेट करती है फ्री फ्लोट को लेके, बट वेटेड एवरेज पीज ऑफ निफ्टी हैव कम अप टू 36, उसमें 450 500 का इटर्नल का भी योगदान है इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्टिंग निफ्टी पी। सो आपका पॉइंटेड क्वेश्चन जो है, न्यू एज बिजनेसेस को मैं मोमेंटम बिजनेसेस मानूंगा, उसकी पूरी डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करके देखूंगा कि ये किस डिमांड सप्लाई के कदार पे क्या एवोल्यूशन है इसकी, उस आधार पे न्यू एजेस बिजनेस खरीदने चाहिए, ना कि क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पे। जैसे अगस्त 14 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एमएससीआई अपनी वेटेजेस को अनाउंस करता है कि उसकी रीजिक क्या है, 14 फरवरी, 14 मई, 14 अगस्त, 14 नवंबर। अगर अगस्त का महीना आने वाला है तो मैं कोई भी न्यू एज बिजनेस को ये कंप्यूट करे बगैर कि एमएससीआई में उसकी नेक्स्ट वेट बढ़ रही है या घट रही है, उसके आधार पे ही इनमें पोजीशन लेनी चाहिए, इवन फॉर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट पर ना आप फोकस करके न्यू एज कंपनीज पर अपनी राय बनाएं, जब बल्कि और डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए आपकी इन कंपनीज पर। शुक्रिया फिरोज ये जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन देखिए, डे हाई से मार्केट फिर फिसला और आधा फीसदी करीब आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आएगा। अब 24,761 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, बैंक निफ्टी 55,963। वीरेंद्र जी, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन, जिस तरीके से हम लगातार हर एक्सपायरी हम ये नोट करते हैं कि आधे घंटे में कुछ फेरबदल होता है, वही देखने को मिल रहा है। हालांकि
मुझे नहीं लगता कि 25% की टैरिफ अनाउंसमेंट का ये कोई असर है। एक टिपिकल एक्सपायरी वाला डे आज प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। कैसी लग रही है अब क्लोजिंग और यहाँ से क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, क्लोजिंग ठीक है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, जो सुबह 200 पॉइंट गिफ्ट नीचे था उसकी तुलना में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। एक्सपायरी डे है, वॉलेटिलिटी रहेगी। मेरे लिए क्या था श्रेया, जो मैंने आपसे 2 बजे बात कही थी कि मेरे लिए ज़रूरी है कि आज की क्लोजिंग का मतलब कल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल था 955 जो बात की थी हमने 2:10 पे कि अगर 955 कटा जो कि 10 डेमा है तो एक आपको 75 पॉइंट का स्विंग और मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। बट अब जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए प्लीज डायरेक्टर साहब। अब आते हैं रणनीति पर। देखिए मैंने फिर भी कहा था कि आप बतौर ट्रेडर ट्रेड समेट लीजिए। ये चार्ट जरा गौर से देखिएगा। आज के हाई पे 2 एवरेजेस आते हैं, 10 और 50। आज के लो पे एवरेज आता है 100 डेमा। मैं कोई फिर ट्रेड कैरी नहीं करूंगा, यकीन मानिए मैं फिर कोई ट्रेड कैरी नहीं करूंगा। आज सुबह हमने डिप को बाय किया, एक ठीक ठाक लेवल पर आके छोड़ दिया। सिंपली कुछ मत कैरी करिए। आज के स्टैट्स को देखेंगे, ये जरूरी होगा देखना श्रेया कि फाइनली टैरिफ लगने के बाद, इस खबर के बाद, एक बड़ी अर्निंग्स के बाद, मारुति के नंबर्स भी आ चुके हैं, एचयूएल के नंबर्स भी आ चुके हैं, क्राइटेक्स के नंबर्स हैं। लेट्स सी कि एफआईआईज ने कितने शॉर्ट अगस्त के लिए अब कैरी करें। 80% ऑफ योर अर्निंग सीजन इज क्लोज नाउ। 80% शेयर। आपका टैरिफ वाला मैटर जो है ना, वो भी लगभग वर्स्ट केस में क्या हो सकता था वो भी आ चुका है। बाकी 20% अर्निंग सीजन के लिए एफआईआईज कितने शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं अगस्त में? दे आर अप्रोक्सीमेटली 1.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एज पर यस्टरडेज को। मैं फिर कह रहा हूं ट्रेड नहीं ले जाएंगे। कल सुबह अगर निफ्टी 100 डेमा के जोन को तोड़ेगा तो फिर शॉर्ट भी करेंगे, और अगर 10 और 50 जो कि आज का हाई है 24,955 अगर वो कटा तो लॉन्ग भी करेंगे, अदरवाइज रेंज में ट्रेड करेंगे। शायद मैं फिर कह रहा हूं, जब तक ये 50 डेमा रीगेन ना हो जाए और जब तक कि 100 डेमा टूट ना जाए, डे ट्रेड करिए, उसमें आप खुश रहेंगे। कोई जरूरत नहीं है पोजीशंस को कैरी करने के लिए। शेयर ओके, न्यूट्रल जाएंगे फिलहाल, पोजीशन कैरी नहीं करने की सलाह है आपको, और कल देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीलर्स किन स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हैं, कहाँ बिकवाली की राय, कहाँ खरीदारी की राय, वो समझते हैं। यतिन जी बताइए। तो देखिए 2 काउंटर्स हैं जहां डीलर्स आज खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इनकी जो अर्जी है भूषण पावर रिलेटेड वो सुनेगा फिर से एक बार। वो तो सेंटिमेंट प्ले कर रहा है, लेकिन डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और बीटीएसटी के लिहाज से 20 से 25 रुपये की अपसाइड यानी 1065 तक के लेवल्स वो देख रहे हैं काउंटर पे आ सकते हैं। इसके अलावा आइनॉक्स विंड थोड़ा कमज़ोर है काउंटर, और डीलर्स को लगता है जिस हिसाब से एचएनआई की बिकवाली यहाँ चल रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, शायद स्टॉक प्रेशर में देखने को मिले, और 145 से 150 तक के टारगेट्स डीलर्स इस काउंटर पे सुझा रहे हैं ऑगस्ट फ्यूचर्स के लिए। ऑगस्ट फ्यूचर्स थोड़े प्रीमियम पे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से 4 से 5 रुपये की डाउनसाइड डीलर्स को लगती है मुमकिन है काउंटर में। ओके, आइनॉक्स विंड बिकवाली की राय, और दूसरा स्टॉक भी रखिए स्क्रीन पर जहाँ पे खरीदारी की राय आई है। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय और साथ ही आइनॉक्स विंड में बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई डीलर्स की तरफ से। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। रुचित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बीटीएसटी ट्रेड के लिए आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। विद इन द बैंकिंग स्पेस अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने बताई है, और आज भी अगर वॉल्यूम्स देखें तो थ्रू आउट द डे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है जो कंटिन्यू रहना चाहिए। 205 पॉइंट आज बैंक निफ्टी अभी नीचे है, फिर भी ये स्टॉक लगभग 2% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, जो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो आरबीएल बैंक में करंट लेवल्स पे 261 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 275 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये हो गया आरबीएल बैंक, और आप चलते हैं मानस के पास। मानस आपका ट्रेड? देखिए एसजेवीएन के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे देखने को मिला है, ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो एसजेवीएन के फ्यूचर में अगस्त मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 94 रुपीज के आसपास चल रहा है, 95.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 91 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एसजेवीएन के अगस्त फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। गाबा से बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं? एक सेल साइड की ट्रेड आई है, एक बाई साइड की, आप कहाँ पे हैं? बाय साइड बिल्कुल डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो है इंडिगो। 5,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 6,000 का एक टारगेट होना चाहिए, स्टॉप होगा 5,850, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है इंडिगो। ओके, इंटरग्लोबेशन 6900 के स्तर पर आपका क्लोज आता हुआ ट्रेड्स। यहाँ पर एक और बाकी है, उसमें रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप?
रुचित जी आप ही का नाम लिया है मैंने? जी मैंने आरबीएल बैंक जस्ट बीटीएसटी के लिए बाय दिया है, सो आई थिंक उम्मीद बाकी हैं। ओह डॉक्टर साहब कह रहा था मैं। अमित जी आपका ट्रेड क्या है? अमित जी म्यूट करके मजा ले रहे हैं। अरे अमित जी अनम्यूट करिए यार। जी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिप आया टुवर्ड्स क्लोज मार्केट के कारण, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। चैनल ब्रेकआउट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। 324 का स्टॉप लॉस रहेगा और 337 के टारगेट्स रहेंगे जियो फाइनेंशियल में। ओके जियो फाइनेंशियल्स याद रखिएगा, जियो फाइनेंशियल्स पे लॉन्ग कॉल है तो ये लाजमी है कि इस ट्रेड पे, इस कॉल पे एक ज़रूर अपनी राय रखें, निजी राय अपने वित्तीय सलाहकार की। और क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन लाइसेंस होल्ड करते हैं, उसी समूह के अंतर्गत CNBC आवाज़ पे आता है। ट्रेड्स पूरे हो गए। क्लोज निफ्टी आईटी का आज काफ़ी ख़राब रहा। एक बार फिर से मतलब आप समझिएगा कि आधे % के लॉसेस। मेरे को एक्सपेक्टेशन आज बड़ी अच्छी मतलब निफ्टी FMCG के कैंडल्स को देखकर है एक अच्छे क्लोज की तरह। बट लेट्स सी क्या करता है ये, क्योंकि आज की हाई शैडो यानी जो आज का क्लोज पॉइंट है और आज का जो इंट्राडे हाई पॉइंट है वही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अच्छा प्रेशर डालने वाले 3-4 स्टॉक्स लेके आइए जो फाइनली एक शॉर्ट ग्रिप के साथ जा रहे हैं। उसमें है एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस टुवर्ड्स डे लो, और साथ ही साथ एक बार HDFC बैंक लेके आइएगा। इट्स आई थिंक टिपिकल एक्सपायरी स्विंग। कल मतलब क्लोजिंग के वक्त HDFC बैंक भी थोड़ा सा बैकफुट पे आया। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं उसमें आप कह सकते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी डिलीवरी, पूरा का पूरा FMCG बास्केट, इंडिगो और हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर 859। रुचित ये अब जिस डाटा साहब प्लीज़ फोर्टिस के रोल ओवर रखिएगा। याद रखिएगा जब मैं आपको इस महीने के शुरुआत में रोल ओवर्स की शीट बता रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है हेल्थ केयर में टॉप रोल ओवर्स थे फोर्टिस के। रुचित अब आपका व्यू क्या कहता है, सेंस क्या कहता है, यहाँ से कौन सा जोन खुल रहा है फोर्टिस के लिए? अभी भी 88% रोल ओवर्स कैरी कर रहा है ये नेक्स्ट सीरीज के लिए, अगस्त के लिए। जी वीरेंद्र जी दो चीज़ है, तो अगर आप सेक्टर की देखिए बात करेंगे तो सेक्टर ही पूरा एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर के पूरे जो पिछले एक महीने में मार्केट में करेक्शन आया है उसमें अगर आप फोर्टिस देखे या किम्स देखे, अपोलो हॉस्पिटल्स देखे, आई थिंक हेल्थ केयर एज अ सेक्टर हैज डन रियली वेल। एंड सेकेंडली विद इन द सेक्टर अगर आप ये स्टॉक को दूसरे स्टॉक के कंपेयर करें तो ये स्टॉक में रिलेटिव वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रही है और जो भी छोटे मोटे करेक्शन या डिप्स आते हैं उसमें कोई वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं आई है। सो 20 डेमा सपोर्ट 816 पे अब ये स्टॉक का शिफ्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये एटलीस्ट 20 डेमा नहीं ब्रेक करता है तब तक ये ट्रेंड आगे कंटिन्यूड रहेगा और पॉसिबली हम 880 890 ये लेवल्स तक का ये स्टॉक को इमीडिएटली जाते हुए देख सकते हैं। सो बिल्कुल दिन के पास भी पोजीशंस है, ट्रेंड को राइड करिए। 20 डेमा के नीचे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए, जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है या 20 डेमा के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक व्यू स्टॉक का बुलिश ही है। फोर्टिस हेल्थ केयर। चलिए अभी काम करते हैं, FNO पल्स पे आते हैं, उसके बाद चलेंगे शेयर पे थोड़ी सी स्कैनिंग के लिए। और पल्स शायद थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बट इसमें कोई तरह नहीं कि आज HUL ने उसके नंबर्स ने पल्स को फिर भी अगर आप देखें डिटोरेट नहीं होने दिया, ख़राब नहीं होने दिया। 103 में शॉर्ट्स थे और 77 में लॉन्ग एंड टुवर्ड्स एंड जो है ना ये प्राइस डैमेज थोड़ा सा हुआ। 34 में लॉन्ग, 15 में शॉर्ट कवरिंग। एक एक करके स्टैट्स को देखते हैं। आई मीन शॉर्ट कवरिंग कंप्लीटली अगर आप देखें तो आज FMCG बास्केट में थी। केन्स आई मीन जो नंबर्स थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव। HUL में करीब करीब 3.25% का मूव। स्ट्रेंथ लॉन्ग गोज विद CP, जियो फाइनेंशियल्स, APL अपोलो ट्यूब्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और इंटरेस्टिंगली APL में लॉन्ग बनी है, डिलीवरी में शॉर्ट कवरिंग थी। इंटरप्रोवेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, डाबर, पेज इंडस्ट्रीज। डाबर भी आई थिंक एक ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, यस अच्छे क्लोज की तरफ। शॉर्ट बिल्डअप हुआ इंडस टावर्स में, IIFL फाइनेंस, चंबल, अंबुजा और अदानी एंटरप्राइजेस में। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की, और ये है द आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर, बिरला सॉफ्ट, CSC और महानगर गैस। शेयर ओके तो ये कुछ स्टॉक्स और ब्रेथ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो जाते जाते ख़राब क्लोजिंग दे जा रहे हैं। टाटा स्टील आज देखें आप डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। टाटा स्टील में दबाव था। NTPC डेलो के आसपास क्लोजिंग, और पूरे एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें तो दबाव था। SJVN
बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आई थी और एक बार एनर्जी स्पेस देखिए पूरे 1% के करीब करीब ये इंडेक्स टूटकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया डे लो के आसपास, कैस्ट्रॉल ऑयल, सीमेंस, पेट्रोनेट, रिलायंस 1.5% के करीब टूटा और बड़ा ड्रैगर रहा आज बाजार के लिए भी। और कौन से स्टॉक्स में थोड़ी दिक्कत थी? कोल इंडिया, एक बार कोल इंडिया का चार्ट रखते स्क्रीन पर, एनटीपीसी का भी रखिए स्क्रीन पर डे लो के आसपास। अमित जी, एनटीपीसी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पर, हालांकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इसको रीड करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के नज़रिए से कैसा लग रहा है ये स्टॉक? डे लो के आसपास क्लोज होने की तारीख 1.5% के करीब करीब थोड़ा कंसोलिडेट तो करता नजर आया एनटीपीसी काफ़ी सत्रों से, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी? शेयर जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, काफी बोरिंग काउंटर है, रेंज बाउंड है, नीचे 320 सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस 340, तो ये 20 रुपए के दायरे में घूम रहा है। इट्स नॉट कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं है, लॉन्ग भी नहीं कर सकते, साइडवेज चल रहा है। बेसिकली इसकी रेंज 320 से 340 की है, तो इट्स बेस्ट अवॉइडेड। अगर थोड़ा डिप आता तो मे बी 320 325 की तरफ जा सकता है, बट दैट्स इट अबाउट दिस काउंटर। ओके, बोरिंग काउंटर लगातार हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, तो फिलहाल तो अवॉइड करने की ही राय है। कहाँ बाइंग होती हुई नजर आई आज? तो एफएमसीजी पैक था क्लियरली आज सेक्टर ऑफ द डे, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी पूरे एफएमसीजी पैक में लगी। इसके अलावा दिक्कत कहाँ थी? आज फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली थी, जो पिछले कुछ सत्रों से मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली। ऑयल एंड गैस टूटा और रिलायंस में बड़ा एक फैक्टर। आईटी बीच में सुधरा था, लेकिन फिर आधा फीसदी करीब करीब गिरकर क्लोज हो रहा है। साथ ही आप देखिए बैंक्स में भी जाते जाते प्रेशर फिर से बनता हुआ नजर आया, टिपिकल एक्सपायरी का दिन। और अब मार्केट अगर आप देखें तो जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्लोजिंग कैसी रही ये समझते हैं वीरेंद्र जी से बिग वॉल पे। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू, क्लोजिंग कैसी लग रही है मार्केट की अब? शेयर क्लोजिंग आप कह सकती हैं सेंटिमेंटली इट्स स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली मिडवे, जस्ट अबव 100, जस्ट बिलो 50। और इस आई थिंक डिलेमा को, इस दुविधा को दूर करेगा अगस्त का महीना, जो कल से कमेंस होगा, अगस्त की सीरीज। आज का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 50 डेमा, एग्जैक्टली शार्प, और लो एग्जैक्टली 100 डेमा। आइए देखते हैं कि आज टुवर्ड्स क्लोज सेक्टोरियल जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। नो डाउट आज निफ्टी बैंक के निफ्टी बैंक में एक समय इंट्राडे में लगभग आप समझिएगा कि 400, 500, 600, 700 पॉइंट का पुल बैक था। ये क्लोज आ रहा है अगेन 56,000 के पुट राइटर्स के आसपास, तो देखिए बहुत खराब नहीं है। निफ्टी करीब करीब 24,759 पे, और खराब थोड़े से मिड कैप्स थे, 1% स्लाइड हुए। आईटी 0.5% आज फिर स्लाइड हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशो थोड़ा सा खराब ही था, बट मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, देखिए जो एक अर्निंग्स का पार्ट था ना, उसमें आज एफएमसीजी आज के दिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैरी कर रहे हैं अपने साथ, सकारात्मक। अब आइए जरा सेक्टर प्राइस परफॉर्मेंस पे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आधा 0.22%, कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पे। पीएसयू बैंक्स बैकफुट पे थे, डिफेंस अगर आप देखें बैकफुट पे था। कैपिटल मार्केट थीम सबसे ज़्यादा स्लाइड हुई यहाँ पर, जिसकी मोर और लेस प्रेजेंस जो है वो मिड कैप में ज़्यादा है। मेटल्स बैकफुट पे रहे, और एफएमसीजी आज 1.25% ऊपर। उसके बाद द फार्मा बैकफुट पे था, आज ऑयल गैस बैकफुट पे था, और साथ ही साथ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। तो सेक्टोरल प्राइस परफॉर्मेंस शायद आपको इतनी बहुत अच्छी नजर ना आए। एक बार आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे, यानी निफ्टी को कौन ड्रैग कर रहा था और किसने रिवर्सल प्रोवाइड किया। रिवर्सल प्रोवाइड करने के क्रम में आई थिंक आज का दिन बिलोंग करता है एचयूएल। मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास नंबर आए। उसके बाद जो स्पाइक आया, मेरे ख्याल से उस वक्त प्राइस था इसका 2440 रुपये। वो एचयूएल के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे प्रमोटर के मतलब की खबर के चलते अगर आप देखें, बाइंग के उसके वारंट्स वाली खबर के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आया। एटर्नल अगेन अपने करियर के हाईएस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी अर्निंग से पहले मैं जो कह रहा था ना आपको कि सारी की सारी कॉल बिकी हुई है, 410 से लेकर 440 तक नहीं क्रॉस कर पाया फाइनली उस ट्रेजेक्ट्री को। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बट बैकफुट पे था अदानी एंटरप्राइजेस। पोस्ट अर्निंग्स क्रैक हुआ, क्रैश हुआ इनफैक्ट 2431 के स्तर पर 4% नीचे। टाटा स्टील, सन फार्मा ट्रेडर्स, अदानी पोर्ट्स। रिलायंस बैकफुट पे रहा। रिलायंस 1400 के क्लस्टर को नहीं गेन कर पाया, रीगेन कर पाया, वो थोड़ा सा मायूस करता